Now, I would like to invite Professor Anita Rodora, President of the Geographical Society of Central Himalaya, to start the program. Professor Anita Rodora, ma'am. नमस्कार। ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ सेंट्रल हिमालय द्वारा हिमालय दिवस पर आयोजित नेशनल वेबिनार में प्रतिभा कर रहे देश के सभी विद्वानों, एमिनेंट स्पीकर्स, सभी शिक्षकों, यंग फैकल्टी मेंबर्स, रिसर्च स्कॉलर्स तथा छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं सर्वप्रथम वेबिनार के प्रथम की स्पीकर प्रोफेसर पीसी तिवारी जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप कुमाऊं विश्वविद्यालय के नैनीताल कैंपस में भूगोल विभाग के प्रोफेसर तथा फॉर्मर हेड के पद को सुशोभित कर चुके हैं तथा वर्तमान में आप ICSSR में सीनियर फेलो के पद पर कार्यरत हैं। सर, आज के वेबिनार में आपका अभिनंदन। आज के दूसरे की स्पीकर आदरणीय प्रोफेसर AK बियानी जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप DVS PG कॉलेज देहरादून में जियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर तथा HOD के पद को गरिमा प्रदान कर चुके हैं और वर्तमान में पर्यावरणीय व भूगर्भीय विषयों पर हम सभी का ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। सर, आज के वेबिनार में आपका अभिनंदन। मैं परम आदरणीय गुरु जी प्रोफेसर के कुमार सर का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ, जिनकी प्रेरणा, संरक्षण तथा प्रयासों से हमारी सोसाइटी हिमालय की पारिस्थितिकी व पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए समय समय पर वेबिनार तथा अन्य कार्यक्रमों को आयोजित करती रहती है। इसके अलावा सोसाइटी से हमारे यंग ज्योग्राफर्स तथा रिसर्च स्कॉलर्स भी जुड़े हुए हैं, जो निरंतर सोसाइटी को अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ सेंट्रल हिमालय की एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों माननीय प्रोफेसर SC खरपा सर का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। इसके साथ ही प्रोफेसर JS रावत सर का मैं आज के वेबिनार में स्वागत करती हूँ। प्रोफेसर BP सती जी, जो मिजोरम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी आज के वेबिनार में स्वागत है। प्रोफेसर DD चौनियाल जी, प्रोफेसर MS नेगी, प्रोफेसर VR मैन, प्रोफेसर A राजशेखर, प्रोफेसर RS कुमार, प्रोफेसर DS नेगी, प्रोफेसर अनीता पांडे, प्रोफेसर पूनम रौतेला और प्रोफेसर BP नैथानी को भी मैं हार्दिक और अभिनंदन करती हूँ। इसके अलावा हमारे आज के वेबिनार में विभिन्न महाविद्यालयों के वरिष्ठ फैकल्टी मेंबर्स भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का आज के वेबिनार में स्वागत और अभिनंदन है। वर्ष 2021 में ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ सेंट्रल हिमालय का गठन प्रोफेसर के कुमार सर के निर्देशन व इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक पहलुओं का गहन अध्ययन करना है। तो छात्रों, भूगोल विषय से जुड़े समस्त छात्रों व शिक्षकों का उचित मार्गदर्शन करना भी हमारी सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है। हिमालय न केवल भारत अपितु अनेक एशियाई देशों की भी जीवन रेखा है व प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है, किंतु विकास के नाम पर हो रहे अविवेकपूर्ण निर्माण कार्यों, अनियंत्रित पर्यटन, जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय की अमूल्य जैव विविधता, नाजुक पारिस्थितिकी व पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही स्थानीय जनमानस का जीवन भी इससे प्रभावित हो रहा है और उनका जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। हिमालय पूरे देश की बेशकीमती धरोहर है, जिसे संरक्षित करने के लिए हम सभी को
सामूहिक प्रयास करने होंगे। हिमालय की इन्हीं समस्याओं और संभावित संभावनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। मुझे आशा है और विश्वास है कि आज के वेबिनार में हिमालय क्षेत्र से जुड़ी गंभीर समस्याओं पर अर्थपूर्ण गहन विचार विमर्श और मंथन होगा, जिससे समाधान हेतु नवीन तथा जानकारियों से सभी प्रतिभागी लाभान्वित होंगे तथा रिसर्च स्कॉलर्स इस क्षेत्र के संवेदनशील व अनछुए पहलुओं पर नवीन शोध कार्यों हेतु प्रेरित होंगे। हार्दिक धन्यवाद। अब मैं पुनः राजेश भट्ट को अग्रिम कार्रवाई हेतु आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर राजेश भट्ट। Thank you, ma'am. Now, I would like to invite the key speaker, Professor Prakash C. Tiwari. Prakash C. Tiwari is currently Senior Fellow of the Indian Council of Social Science, New Delhi, Department of Geography, Kumaon University, Nainital, and Vice Chair of the Commission of Cold and High Altitude Region of the International Geographical Union. He is also worked and as Assistant Director at National Institute of Rural Development, Government of India, Hyderabad. Professor Tiwari is Mount Sustainable Development and Climate Change Adaptation and Specialist, and he has worked with various national and international organizations. Now, I would like to invite the speaker, Professor Rishi Tiwari, to kindly deliver his lecture. Professor Prakash Tiwari, sir. Hello. 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 यस सर आवाज आ रही है आवाज। अच्छा, थोड़ा इको हो रहा है। धन्यवाद। डॉक्टर अनीता अरोड़ा मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर भट्ट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मेरा उदार परिचय इस कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों के साथ कराया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ, गदगद हूँ, गौरवान्वित हूँ। सभी विद्वज्जनों को, विद्यार्थियों को जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, मैं उनको नमस्कार कहता हूँ। ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। Before I start my talk, I would like to express my deep sense of gratitude to the founder of this society, Central Himalaya Geographical Society, Professor Kamlesh Kumar ji, all the members of the advisory committee of the society, particularly Professor Chonial ji, Professor J.S. Rawat, Professor B.P. Sati, Professor Anita Pare, and all other members of the advisory committee, and also the members of the organizing team, all the senior geographers, researchers, and scholars of geography, and those who are concerned and interested in finding solution to the critical problem that the Himalayan mountains are facing today. I salute all of them. I extend my heartiest gratitude to them. And this is a great opportunity for me as the society provided this morning to interact with some of the learned persons and the renowned geographer of Uttarakhand on the developmental and environmental challenges that the Himalaya is facing. Thank you so much for providing me this virtual platform of the society to interact with a large number of intellectual academics and geographers who have concern for the sustainable development of the Himalayan mountain. Please allow me take a few minutes time to share my presentation with you.
कृपया आप बताएं कि मेरा जो पहली स्लाइड है जिसमें मेरे प्रस्तुतिकरण का शीर्षक प्रदर्शित किया गया है, क्या वो आप लोगों के स्क्रीन पर आ रही है या नहीं आ रही? यस सर, आ यस। चुकी है सर, विजिबल है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके इस अनुग्रह के लिए आपका आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ, और जो सम्मान आपने मुझे दिया, मुझे उससे अतीब गौरव की अनुभूति हो रही है। और मैं आपकी इस सोसाइटी के माध्यम से अनेक भूगोलवेत्ताओं के साथ जुड़ने का जो मुझे अद्भुत अवसर प्रदान हुआ है, उससे मैं बहुत गौरवान्वित हूँ और सम्मानित अनुभव कर रहा हूँ। जो आज की वार्ता के लिए, विमर्श के लिए जो मैंने विषय का चयन किया है, जिसके लिए मुझे आयोजकों ने पूरी स्वतंत्रता दी थी, उनके लिए पुनः मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। यह जो शीर्षक है मेरे विचार विमर्श का, वह बहुत ही सामान्य विषय है। हम पिछले कई दशकों से उनके ऊपर हम निरंतर चर्चा करते रहे हैं, लेकिन आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बदलती हुई परिस्थितियों में जिस तरह की पर्यावरणीय और एक संतुलित विकास की चुनौतियां पूरा हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र जिनका सामना कर रहा है, उनका समाधान ढूंढने के लिए और हिमालय के संतुलित और सतत विकास की दिशा निर्धारित करने के लिए बदलती हुई परिस्थितियों में उसकी पुनर्व्याख्या, अन्वेषण और उसके ऊपर पुनः मंथन और विमर्श करने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने एक बहुत सामान्य विषय अपने अनुभव और अपने विचार संप्रेषित करने के लिए मैं जो मेरे जो सहयोगी जो इसका प्रशासनिक नियंत्रण जिनके हाथ में है इस वार्ता का, मैं उनसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने अपने माइक्रोफोन जो है अनम्यूट करके रखे हैं, और जिससे काफी सारी जो है व्यवधान हो रहा है। और उसको उनसे निवेदन करें कि सभी लोग जब तक कि वो बोलना न चाहें तो अपने माइक को जो है कृपया म्यूट करके रखें, तो मुझे आप तक अपनी बात पहुंचाने में सुविधा होगी, और आपको भी जो मैं बातें आपसे संप्रेषित करूंगा उनको आप तक पहुंचाने में, आपको सुनने में और समझने में आसानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस व्यवधान के लिए। आपका प्रेजेंटेशन शो नहीं हो रहा है सर, प्रेजेंटेशन शो नहीं हो रहा है आपका, वो चला गया, डिसअपीयर हो गया प्रेजेंटेशन। चलिए मैं दोबारा प्रयास करता हूँ प्रोफेसर सतीश जी, मुझे कुछ समय आप और दीजिए। अब दिखाई दे रहा है? जी सर, दिखाई दे रहा है। क्या? यस सर, दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिखाई दे रहा ना? हेलो? जी जी दिखाई दे रहा है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि ये तकनीकी कुछ कमियां रह जाती हैं जो न तो मेरे नियंत्रण में होती हैं, जो आपके नियंत्रण में होती है, तो बीच बीच में इस तरह का व्यवधान अपेक्षित है। तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना चाहूंगा और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उसको आप मेरा साथ दें उसमें। तो जो मैं आपके सम्मुख अपने अनुभवों को प्रस्तुत करूंगा हिमालय के बारे में, और किस तरह से जो वैश्विक स्तर के पर्यावरणीय परिवर्तन है वो हिमालय के ऊपर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, और हिमालय का अस्तित्व उससे अस्तित्व के ऊपर संकट हो रहे हैं। तो ये जो मेरे अनुभवों का आधार है वो मुख्य रूप से मेरी कुछ शोध परियोजनाएं हैं, जिनको मैंने अनेक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ हिमालय के ऊपर अपने अनुसंधान करने के लिए मैंने उनका उपयोग किया है। मुख्य रूप से मैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट काठमांडू, जिसको मैं संक्षेप में इसी मोड कहूंगा क्योंकि उसका नाम मुझे बार बार लेने की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसी मोड के साथ मैं पिछले 25 वर्षों से काम कर रहा हूं। और 2017, 18, 19 में एक हमने हिंदू कुश हिमालय असेसमेंट प्रोग्राम
की कार्य योजना पर काम किया था और जिसमें विश्व के लगभग 100 प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने जो पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर काम कर रहे हैं, एक 5 वर्षों के गहन मंथन के बाद जो है अपने जलवायु परिवर्तन के ऊपर, जल प्रणाली के ऊपर, खाद्य सुरक्षा के ऊपर, पोषण सुरक्षा के ऊपर, महिलाओं की स्थिति के ऊपर एक विशद जो है एक प्रकाशन हमने किया है, जो इसी मोड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे अनेक जो निष्कर्ष, जो सूचनाएं मैं इसमें आपके साथ साझा करूंगा, वो सूचनाएं उसी हिमालय असेसमेंट प्रोग्राम पर आधारित हैं। अभी हम इस समय जो है इसी मोड के साथ हिंदुकुश हिमालय स्प्रिंग असेसमेंट आउटलुक पर काम कर रहे हैं। हम पूरे जो हिंदुकुश हिमालय के 8 देश हैं उनमें जो है प्राकृतिक जल स्रोतों की इस समय क्या स्थिति है और उनके सामाजिक आर्थिक क्या प्रभाव है, और आने वाले दिनों में हम कैसे स्प्रिंग सेट मैनेजमेंट के माध्यम से उन जल स्रोतों का पुनरुद्धार कर सकते हैं। तो इस पर हम काम कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड जो काम अभी तक हमने किया है उसके भी कुछ निष्कर्ष मैं अपने विमर्श में सम्मिलित करूंगा। इसके अतिरिक्त 2017 से लेकर के 19 तक मैंने फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन का है उसके साथ अटेनिंग जीरो हंगर इन माउंटेन्स के ऊपर काम किया। उसके निष्कर्ष भी प्रकाशित हो चुके हैं 2019 में ही। तो उससे भी मैं कुछ परिणामों को, सूचनाओं को और निष्कर्षों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप सभी दिग्गजन हैं, अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। जो भी सूचनाएं, जो अपने अनुभव, जो निष्कर्ष मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा करूंगा, मैं आपसे कभी भी अपेक्षा नहीं करूंगा कि आप उन निष्कर्षों से, मेरे विचारों से, मेरे अनुभवों से सहमत हों, क्योंकि जब हम उन पर मंथन करेंगे, आपके विचार उस पर आएंगे और हम उस पर मंथन करेंगे, तभी हम हिमालय के लिए एक सुनियोजित और संतुलित विकास की योजना बना सकते हैं और जो नीति नियंताओं तक जाकर के हिमालय के संतुलित विकास और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी सहायता कर सकती है। मैं पिछले वर्ष जो है 5 दिसंबर 2023 को इसी मोड में गया था और वो 5 दिसंबर 2023 जो था वो दिन था जब इसी मोड को स्थापित हुए 40 वर्ष हो चुके थे। तो 5 दिसंबर 2023 को इसी मोड ने अपना 40वां जन्म दिवस, स्थापना दिवस मनाया। तो मुझे भी उस अवसर का, उस समारोह का साक्षी बनने का अवसर हुआ। तो उस समय इसी मोड ने सूत्र वाक्य चुना है जिसका प्रयोग आने वाले दिनों में इसी मोड अपने पूरे कार्यक्रमों में करेगा और उसने सारे हिमालयी राज्यों के वैज्ञानिकों और सरकारों को भी उत्प्रेरित किया है कि वो भी उस सूत्र वाक्य का प्रयोग करें। सूत्र वाक्य बहुत सामान्य है, लेकिन मेरे ऊपर उसका बहुत प्रभाव पड़ा है। इसलिए मैं उस सूत्र वाक्य को आवाज आ नहीं रही है सर, बांटना चाहता हूँ। सूत्र वाक्य है, लिसन टू द माउंटेन एंड देयर पीपल। पर्वतों को सुनिए और वहां के लोगों की आवाज को सुनिए। पर्वत क्या कह रहे हैं? पर्वत से कुछ बात करना चाह रहे हैं। तो विकास की उन्मुख होकर एक कदम आगे बढ़ाने से पहले आप हिमालय के संकेतों को सुनिए, उसकी भाषा को सुनिए, वहां के लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को सुनिए और तभी विकास की तरफ अगला पगचिन्ह, फुटप्रिंट आप स्थापित करिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हिमालय जो है चीत्कार कर रहा है, रुदन कर रहा है और हम सबसे यह कहने का प्रयास कर रहा है कि जिस तरह से आप हिमालय को समझ रहे हैं और जिस तरह से आप अनियंत्रित, अनियोजित प्रक्रिया से हिमालय के प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन कर रहे हैं, तो विकास के मार्ग में आगे बढ़ने से पहले, कोई बहुत बड़ी सड़क की परियोजना बनाने से पहले और अनेकानेक विकास की अवस्थापना का निर्माण करने के लिए एक बार सोचिए, क्या हिमालय उसको के अंदर उसको सहन करने की सामर्थ्य है अथवा नहीं है, या वहां के लोगों को उस विकास की आवश्यकता है या नहीं है। तो आज हिमालय की जो चीत्कार है वो पूरे विश्व में प्रतिध्वनित हो रही है। कारण यह है
कि हिमालय से जो निकलने वाली जो पर्यावरणीय सेवाएं हैं, जल, जैव विविधता, मिट्टी आदि जो पर्यावरणीय सेवाएं हैं, वो विश्व के एक बहुत विशाल भूभाग और वहां रहने वाली जनसंख्या के अस्तित्व का मुख्य आधार है। इसलिए हिमालय अपने लिए जीवित नहीं है, हिमालय का अस्तित्व अपने लिए नहीं है, हिमालय का महत्व अपने लिए नहीं है, हिमालय का महत्व सार्वभौमिक है। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले हमें हिमालय की आवाज को सुनना चाहिए, क्योंकि लोगों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और सपनों का जो है सम्मान करना चाहिए। आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो, कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो सर, आर यू एबल टू हियर मी? सर कंटिन्यू रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, आप कंटिन्यू रखिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। Sir, sorry to say this, but your voice is not clear, sir. चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बीच बीच में मुझे ये पूछना पड़ेगा। पार्डन? हेलो 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 हेलो, आ रही सर आवाज आ रही है। चलिए, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। तो मैं जो है पहले मैं हिमालय या उत्तराखंड में प्रवेश करने से पूर्व, हेलो हेलो हेलो, क्या बोलूं? आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। तो फिर बीच बीच में अनेक लोग बोल रहे हैं ना, उससे मुझे ये लग रहा है कि शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं निवेदन करूंगा कि जो इसके प्रशासक हैं, जो इसको संचालित कर रहे हैं, वही केवल मुझे बताएं कि आवाज आ रही या नहीं आ रही। अगर सभी लोग एक साथ कहेंगे आ रही तो फिर ओके। बिल्कुल सर, अब आ रही सर आपकी आवाज जो आ रही है। मैं पूरे वैश्विक परिदृश्य में पर्वतीय क्षेत्र की क्या स्थिति है, कैसे वो परिवर्तित हो रहे हैं, कैसे हिमालय में जो है वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तनों का प्रभाव पड़ रहा है, और उनके मध्य में मैं सदैव उत्तराखंड हिमालय को स्थापित करने का प्रयास करूंगा। मेरी चिंता का मुख्य विषय उत्तराखंड का हिमालयी क्षेत्र रहेगा। मेरा जो है फोकल पॉइंट, केंद्र बिंदु भी सदैव जो है उत्तराखंड का हिमालयी क्षेत्र रहेगा, लेकिन मैं पूरे वैश्विक और हिमालयी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड को स्थापित करने का प्रयास करूंगा। अगर इफ यू मुझे थोड़ा अनुमति दीजिए कि मैं भाषा को बदलूं, और क्योंकि मेरी जो सारी स्लाइड्स हैं वो अंग्रेजी में बनी हुई हैं, इसलिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि आप मुझे थोड़ा सा अंग्रेजी में अपनी बातचीत आप तक पहुंचाने की अनुमति आप देंगे, और कहीं पर भी आवश्यकता होगी तो मैं उसको हिंदी में आपको समझाऊंगा, और उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। Mountains, अगर आप mountains, if you talk about the mountain constitute the source of fresh water for 70 to 80% of the global population. Means the people, almost population of the world who is living in the mainland depends on the mountain, only on the mountain for the supply of their fresh water. And 30% of the global forest, and as much as 50% of the global biodiversity hotspots are located only and only in the mountain regions of the world. And mountains are the second most favorite tourism destination in the world after the sea coast. And nearly they attract 20 to 25% of the global visitors every year. And mountains are the treasure of the traditional knowledge, what we now call the citizen science. The UNESCO has launched a worldwide project. Hello? Hello? हेलो, यस सर। ये कुछ कहना, बीच में कुछ लोग कह रहे हैं कुछ, उससे जो मेरा ध्यान है उस तरफ जा रहा है, और मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि शायद मैं अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं।
तो अगर सब लोग सुन रहे हैं तो जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो बताएंगे कि सबको सुनाई दे रहा है। अदरवाइज मैं निवेदन करूंगा बाकी सारे प्रतिभागियों से, सम्मानित प्रतिभागियों से, वो अपने माइक्रोफोन को म्यूट करके रखें ताकि बीच बीच में इस तरह का व्यवधान न हो और मेरा ध्यान भटक करके उस तरफ न जाए। तो mountains are considered the treasure of the traditional knowledge, and the UNESCO has launched a worldwide project to document and preserve the traditional knowledge of the people, because in the changing environmental and socio-economic condition, we need the people's traditional knowledge, particularly in the climate change adaptation, in resilient sustainable development, not only in the mountain region, but in all geographical regions of the world, and therefore be considered at par with the natural sciences. So mountains are the treasure of the traditional knowledge compared to any other geographical regions of the world. Why? Why mountains are the treasure? Why the mountains are more prosperous in traditional knowledge? Because as we all know, the life in the mountain is full of struggle. We have to struggle day in and day out to fulfill our resource needs in the mountain. That's why more we struggle with the nature, more we are able to understand the nature. That's why always everywhere the traditional knowledge of the people who are living in the mountain is much richer than the people living in other geographical region of the world. And at the same time, the largest population of the world and food insecure is living in the mountain. I'm not including the mountain like the Alps and the Rockies. I'm including particularly the mountain of the developing and less developed country. More than 50% of the poor people of the world are now living in the mountain, and as much as 45% of the food insecure population still live in the mountain region. The Food and Agricultural Organization, together with the Mountain Partnership, observed that as we move up on the mountain, the poverty and the food insecurity increases. And this needs to be investigated. There are a lot of young researchers who can take up this topic, whether the food and agriculture and mountain partnerships observation are correct or not, they are applicable in Uttarakhand, Himalaya or not, whether the poverty is actually increasing with the rising altitude, the food insecurity is increasing with the rising. This is still a matter of investigation in the Himalaya. At the same time, mountain received the first signal of any kind of change, including the environmental change. And the first impact of all kind of environmental changes, including the climate change, are felt and observed only and only in the mountain region because of their highest elevation and fragile environment. Then the mountain transmit the signal of these changes to other parts of the landscape, particularly down to the plain areas. So that's why mountains are considered the early warning system of environmental changes. But unfortunately, the decision regarding the development of the mountain, the well-being of the people, the conservation of the mountain environment and natural resources are not often taken by the people who are living in the mountain. They are very much shaped and designed, tailored and implemented by the agencies and institutions always located outside the mountain. This is quite applicable in the state of Uttarakhand. We have all-weather road project, we have Char Dham project, we have eco-sensitive zone notification, and we have construction of our project, big dams. All our decisions are never taken by the people who are living in Uttarakhand. These decisions have been imposed on the mountain by the agencies, by the policy maker, by the decision maker, who have nothing to do with the mountain, and they are always have their decision making process outside the mountain. So we need to revert this process. Why not the decision related to the development and environmental conservation
of the mountain should be taken by the mountain people, by the mountain agencies, by the mountain local government. So we need to revert, we need to think about that, how we can revert this process. My next slide is in front of you, sir. दूसरी स्लाइड क्या आपके स्क्रीन पर है? I have changed the slide. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, It's visible. so the mountain region, you saw in the first slide how important, how significant mountains are for the entire global community, for the sustainability of the entire socio-ecological system of the planet. So mountains are not surviving for themselves. They are not sustaining the livelihood of the people who are living in the mountain, but they are critically important for the global sustainability. But mountains have long been marginalized. Their development needs have not been taken into proper consideration, and their developmental priorities have not been taken. Their voices were not heard. But over the past decade, our approach and our understanding of the problems of mountain have changed drastically. How? Because it indicates in the 1992, in the Rio conference, which we call the Rio Summit, it was the first time in the history of the United Nations when the United Nations expressed its concern for the first time for the development and the conservation of the mountain ecosystem. And never before that, any international agency think about the mountain and the state of the people who are living in the mountain. And it was followed by the 2002, when the Viscase Mountain Summit held, and again mountain came into very special focus. Then in 2012, when the Rio 20 plus took place again in Rio, so during that time, there was not a serious discussion of Rio conference. Then we celebrated the International Year of Sustainable Mountain Development in 22, and now we are preparing a framework, a broad agenda for the Viscase 2025 Global Mountain Summit and a sustainable goal attainment deadline, the December 2023, and we have a lot of programs being evolved, being conceptualized, and being implemented all across the world for reducing the disaster risk in the mountain, evolving strategies for climate change adaptation across the mountain region of the world, conservation of nature and natural resources, and sustainable use of the natural resources, people's well-being. So you will see in coming year how the thinking, how the concern of the mountains development are shaped up, and it has impact on the mountains across the world, including the Himalaya. Despite all those noble efforts, we are not sensitive and responsible towards the mountain development still today. Despite all these noble efforts, we are not sincere, we are not sensitive, we don't seem responsible for the sustainable development of the mountain. Even today, you can compare very easily with the situation in Uttarakhand. If we are really sincere for the sustainable development of the youngest mountain state of the Himalaya, that is Uttarakhand, our capital would not have been for the last 24 years in Dehradun. Dehradun cannot represent a mountain view, a mountain perspective, a mountain issues, mountain problem. We cannot view the mountain issues sitting in the valleys of Doon, the fertile and the plain valley of Dehradun. So that's why neither the political system, neither the administrative system, and not even the people are very much sensitive even today about the sustainable development of the mountain and the well-being of the mountain. Although the United Nations started thinking about the mountain in 1992, but even after that, the United Nations did not express any serious concern about the changes taking place in the mountain region of the world. So we are not serious, we are not sensitive, and despite there is a common observation among the intellectual and scientists across the world that all these noble initiatives have rather unlocked the mountain for the exploitation of their natural resources by the multinational companies
coming from different part of the world. And now we cannot say to any company, any corporation, not to make use of. So we have to open our resources. We have given the access to the people, to the communities, to the corporation to come and exploit the natural resources of the mountain region of the world, and that is completely fully applicable in case of the Indian Himalayan region as well as in case of Uttarakhand. You see that after the withdrawal of the 370 article, the people of Ladakh are on the road. They have no back for the protection of their natural resources, which have not been exploited so far. So they are afraid of that the Ladakh is going to face same situation as the other Himalayan region of the country are now facing. So we are not sincere. We are not sensible. So are you able to see my next slide? My next slide is on your screen, sir. Hello? 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 Yes, sir. You Okay. So as I told you in the beginning, why we should think about the environmental issues, the development of issues of Himalaya, because we have a lot of debate in the past decade on these. Because the things have changed, the environmental conditions are changing, the socio-economic transformation is very rapid in the Himalayan region, so it is putting a serious challenge to the sustainable development of the mountain resources, and it has threatened the well-being of the mountain communities. Why? We need to understand the Himalaya. Himalaya is a pristine socio-ecological system. It is a very, very pristine, a very unique system of geographical, hydrological, biological diversity, not comparable to any other mountain region of the world because of its highest altitude. At the same time, we have a diverse culture in the Himalayan mountain region. Almost all important religions of the world, besides Hinduism, Islam, Buddhism, Sikhism, and all Christianity, all flourish and develop in the Himalayan region. So we are a complex of natural as well as cultural diversity, which is not comparable to any other mountains of the world. At the same time, we must remember that Himalaya is the most densely populated mountain of the world. In no other mountain of the world, so many people are living, and at the same time, we also understand that Himalaya is the most rapidly arising mountain. And this is the case with the Uttarakhand Himalaya. Uttarakhand Himalaya is also the part of the densely populated mountain of Himalaya, and it is the most rapidly arising Himalayan state of the country. And this is creating a lot of problem and related to the climate change and responding to the disaster induced by the climate change in the region. It constitutes the headwater of the South Asia. It constitutes the source. Headwater means the source of water. It constitutes the source of the largest river system of the world that sustain 45%, nearly half of the global population living in the densely plains of South Asia, who are some of the poorest people of the world, with subsistence agriculture as the only means of livelihood. But ongoing environmental changes, which are driven by the unplanned urbanization, the climate change, and the mass tourism are destabilizing the entire Himalayan socio-ecological system, including Uttarakhand, leading to the environmental and socio-economic instability across the Himalayan system. Climate change is particularly causing enormous loss of life, property, infrastructure. It is destabilizing, undermining the community's livelihood asset, both in the mountain and their densely populated lowlands. And these changes will have serious impact on water, food, livelihood security, and also it will raise the interstate conflict within the riparian countries in South Asia, India, Pakistan, Nepal, India, Bhutan, India, Bangladesh, India, and India being the largest country of the South Asia, it shares international border with most of the South Asian countries. So India should prepare to resolve these conflicts with its neighboring
countries, particularly in the face of the climate change. So this is very significant about the Himalaya. But Himalaya is still at the crossroad of development. Unfortunately, despite these emerging challenges and threats, which are challenging the sustainability of the entire developmental process across the Himalaya as well as in Uttarakhand, we don't have any program of development. We don't have any development planning. And the last development program which was implemented in the Uttarakhand was the Hill Area Development Program. When we were the part of Uttar Pradesh, the Uttar Pradesh government, on the demand of the people of UP Hills, launched a program that was known as the Hill Area Development Program. And under that Hill Area Development Program, a secretariat, a mini secretariat for the hill development was established in Nainital, and at the same time, two very important organizations, the Kumaon Mandal Vikas Nigam and the Garhwal Mandal Vikas Nigam, have been established with a novel idea to initiate the process of integrated development in both the cultural region in Garhwal and Kumaon of the hilly region of the Uttar Pradesh. But both the organizations failed in attaining their object, and their activities have been derailed for a long period of time. Yesterday, I had the opportunity of listening the lecture delivered by Professor Sati and others on the tourism day, not online but offline. And there was a lot of things that the Kumaon Mandal Vikas Nigam and the Garhwal Mandal Vikas Nigam are the agencies who have the responsibilities of making tourist policy and tourist development in Uttarakhand. No, it is not like, sir, they don't have any authority to make a policy decision related to the tourism development in the Uttarakhand state, neither the Kumaon Mandal Vikas Nigam nor the Uttarakhand Vikas Nigam. They have now become the burden on the government. As you know, they are only surviving. They are able to provide the salary of their employees by generating income only by through two means, by selling out the hotel rooms and selling out the guests. They are only two businesses. Okay, so they have become burden. So they cannot help in planning the tourism. At the same time, we had two developmental authorities in Garhwal and Kumaon region. In Garhwal, we had Dehradun Masuri Development Authority, and in the same at the Par we had a Nainital Development Authority. Both these developmental authorities were established by the UP government to have a balanced urban development in both the region, but they are not, their responsibilities, their activities are not now only confined to pass or whether reject the map or wedding or domestic purposes. So they are confined. This were not all the efforts we took in the past for the development of the hilly region of the Uttarakhand have all failed, and at present we do not have any planning, any framework, any strategy for the development of the Himalayan region or the development of Uttarakhand Himalaya. So we need to think about that, how we can move ahead with the planned development. Okay. Hello, sir. Hello. Yes, sir. Hello. Fine, going fine. Yes. Okay, sir. The next slide is in front of you, sir. The next slide is in front of you, sir. The lesser Himalaya, the hot spot of Himalaya. Yes, wonderful, sir. Thank you so much. So here, when we think about the planned development, the conservation of the environment, adapting to the climate change and responding to disaster, and having a planned urban and tourist development in the Himalaya. So I think the lesser Himalaya is the hot spot of the entire Himalayan region. Why? The reason is that the water sources originating from the lesser Himalayan system contribute to a minimum of 70 to 80% water in the Ganges system. Minimum 70 to the 80% water. Only 10 to 20% water is being contributed by the glacier. So they are real source of water to the Ganges system. And the largest proportion of our forest is in the lesser Himalaya, and the largest proportion of biodiversity is also in the lesser Himalaya.
And at the same time, the Lesser Himalaya is the most densely populated mountain range across the Himalaya as well as in Uttarakhand. At the same time, the Lesser Himalaya is the most rapidly urbanizing mountain range across the Himalaya as well as in Uttarakhand. It has the largest proportion of agricultural land of the Himalaya, and it is this part is the highly prone to forest fire, and the 80% of road and other infrastructure is all located in the lesser Himalayan ranges, and the most of the food insecure and poor people live in the lesser Himalayan mountain ranges. So in the coming year, when we think about Himalaya, when we plan something about the Himalaya, so we need to have a specific focus on the sustainable development and conservation of the lesser Himalayan region. My next slide is in front of you, sir. Hello. Sir, My next slide is in front of you. yeah, it's okay. It's okay. Draft environmental impact analysis. Thank you, Professor Satiji, for helping me to interact with the entire community of the participants who are over here. Thank you so much. Please keep on helping me. Okay, probably all of you are aware of the draft environmental impact and policy of the government of India. If it is implemented and it is approved by the government of India, it is going to have very serious implications for the environment as well as socio-economic development of the Himalaya. So please take into account how the new environmental impact assessment policy of the government of India 2020 is going to have very serious impact on the Himalayan ecosystem. Now, under the new policy, any road length, tunnel and pipeline of 100-kilometer stretch in any part of the Himalaya, including the higher Himalaya, Great Himalayan ranges, need not to go through the environmental impact assessment. So any developer, any company can construct 100 meters of road, tunnel, and pipeline all across the Himalayan mountains if it is of 100 kilometer or less. So it is going to have serious impact, environmental impact on the Himalaya. And most of the part of the higher Himalaya, which is the repository of the biodiversity, forest, and the headwater of the South Asia or India, will have serious implication of this new environmental impact assessment policy. All the expansion and widening of national highways in the higher Himalayan ranges and cut through the forest and fragile ecosystem if they are 100 kilometer or less. So no environmental impact assessment is required for that. And at the same time, the new EIA policy allows post facto clearance of the forest. Okay, if you have a plan, if you want to construct any road, any power project in the higher Himalayan ranges, it is not necessary for you to take a prior permission, prior approval of the government of India. You can straight away go ahead with the construction of the project, and after the project has been completed, then you can apply for EIA. So what is the nonsense version? So after a big project has been completed, who is going to say no that project? Okay, then a project operating in the violation of EIA, implement the mega project, including the construction of road and tunnel, is in violations of environmental impact assessment rules. So it can apply for clearance, or not only the clearance will be given. If there are any violations in the EIA, in any construction project, so you or me or any other person is not authorized to make a complaint. The complaint will only be registered by two parties. Either the government will complain or the developer company can complain. No other is authorized to make a complaint. It means these 6 points of the new environmental impact assessment policy of the government of India is going to serious impact on the Himalayan ecosystem, exploitation of natural resources, coming up with mega projects. We cannot say no to any of these activities if this draft policy is accepted
by the government of India. There are a lot of petitions have been filed in the Supreme Court and also ministry to modify the regulation, but I don't know what is the current status of this draft policy. I'm sorry. Okay. Now let me tell you something about why the Uttarakhand and the Himalaya is turning into a water scarce regime. The next slide in front of you, Professor Satiji. Are you able to see my next slide? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. As I told you in the previous slide, there's streams and springs mainly originating from the lesser Himalayan mountains, contributing to 80 to 90% of the discharge of the Ganga system. The glacier snowmelt water is only contributing 10 to 20%. So there is a lot of hue and cry about the melting of the glacier, the fast retreat of the Himalayan glacier. But there, at the same time, there should be very serious concern how to preserve the lesser Himalayan water sources. More than 50% springs in the Ganga headwater have already dried in only in Uttarakhand. At the same time, the people of Ganga basin has access to less than 5% of the freshwater resources. Despite living in the heart of the Asia's water tower, we have only access to less than 5% of the water resources. And the irony is that the water per capita water availability is currently between, this is the data I'm sharing you of the Central Water Commission of Government of India. So we have only 5 to 1,000 cubic meter per person water availability in Uttarakhand, in the mountainous part. When we talk about Uttarakhand, I use the term Uttarakhand means I am focusing on the mountainous part of the Uttarakhand. So the Central Water Commission has fixed a threshold. If the water availability declines below 1,000 cubic meter per person per year, so that area, that region, that state, that district is categorized at the water scarce state. So Uttarakhand is now a water scarce state. Nearly 70% people do not have access to safe and clean water, whereas interestingly, the water demand is likely to increase by twofold by 2030 in Uttarakhand. Despite the implementation of the Government of India's flagship program, the JMM, Jal Jeevan Mission, still 75% people do not have safe access to safe and clean water. I am underlining the term safe and clean drinking water. And if you take the global average, 50% of the global population do not have access to the safe drinking water. So we have 74% people who do not have access to safe drinking water. Nearly 18,000 villages in the mountainous part of Uttarakhand have no piped water supply. I think the situation has a little bit improved during the implementation of Jal Jeevan Mission, but there may be villages with pipe, but there may not be water. And interestingly, the gap between urban water supply and demand is more than 55%. There's a huge gap. So we have been able to provide almost only 50% below than the recommended standard of water to our urban population. You take the example of any city of Uttarakhand. And it is expected that globally more than 70,000 people are likely to migrate due to water scarcity by the year 2030. But in Uttarakhand, the water scarcity has also become one of the major drivers of rural Uttarakhand. The disaster, water scarcity, and droughts have become major drivers of rural out migration in the mountainous part of Uttarakhand. The situations are quite critical in Uttarakhand related with the availability and access to the water to the community. The next slide in front of you, sir. Professor Satiji. Fine. Our forests. Yes, let me talk something about forests. So we are talking about forests. There's a forest fire, depletion of forest, degradation of forest. Of course, this process is continuing. It is taking place as a major concern
for the people, for the forest department, for the government of India, for all that who have concern for the Himalaya. But it is very important, the people of Himalaya, traditionally the forest dwellers, we are forest dwellers. For the thousands of years, we have been living in the forest, with the forest, and interspersed with the forest. Still, a large proportion of rural areas are within the forest, and they are interspersed within the forest. And that's why the forests are not only a natural resource for the Himalayan community, but they are integral component of our economy, our culture, our traditions, our conventions, our history, and our lifestyle. That's why we have been able to protect the forest, to conserve the forest for a long period of time. It's evident by that still we have more than 62% area of the Uttarakhand state under forest. And here you see the mountainous and hilly regions share 30% of the geographical area, and almost equally the same amount of the country's forest. So it means more than 50% of the India's forest is the contribution of the mountain region of the world. And the forests of Himalaya are not a part of their economic system in natural resource. They are a part, a component of the integrated socio-ecological system. And we integrated socio-ecological system means we conserve the forest, we protected the forest, we use the forest, we manage the forest for the fulfillment of our various needs. And at the same time, we also contributed to the sustainable development of the forest. So we have a very close relationship, close interlinkages with the forest of the Himalayan region of the country, particularly the Uttarakhand Himalaya. But why the link is now disrupted? Why the link is no more existence between the forest and the people? Why there is alienation between the forest and the people? The reason is that the approach of development that we adopted for the mountain region is not conducive to the mountain region, and it discontinued that integral relationship with the mountain. At the same time, the environmental conservation framework that we evolved and implemented in the Himalayan region also alienated the people of the Himalaya from their own forest. The environmental conservation framework, let me explain a little bit that, because in the 60s, 1960s, the environmental conservation movement came from the north, which we call the global north, being the developed countries of the world. And the implementation of the programs and activities of environmental conservation have been transferred to the developing and less developing countries of the world at what we call the global south. The idea came from the developed countries, the planning came from the developed countries, the guideline came from the developed countries, and the responsibilities of implementing them have been imposed on the developing and the poor countries of the world. If you go in any part of the Europe, there is no ban on the cutting of forests, even there is no ban on the shooting of the wildlife. Their entire forest system is modified forest system. And we have the natural forest system. So I support that we must conserve the forest. We have already protected the forest. So it is only our responsibility to protect the forest, to have the eco-sensitive zone, and to have more and more area under the wildlife protected area. So this conservation framework people of the Himalaya to their own forest. So now we are not sensitive for the conservation of our forest. But very interesting point is that the 62% of the Uttarakhand forest area provides livelihood to only 5% of the population of the state. Only 5%. The 11% of the agricultural area of the state provides livelihood to 75% population. And 62% of the forest area is providing livelihood to the 5% people. What the irony, what is the paradoxical situation? Why not the forest government should be transformed and should be managed in such a way that it provides
livelihood opportunities to the increasing number of the rural population. So we need to change this paradigm. We need to think about how the forest government need to be transformed in the coming year. Second year. I will link this with when I talk about the agricultural situation in the state. India's forest cover in 2021, whereas the forest of the mountain in the hilly region decreased by 0.3% between the same period of time. So the Himalayan forest is decreasing and the country's forest as a whole is increasing. So we need to explore why this is happening across the Himalayan mountains. More than 56% forest cover is prone to forest fire. This is about Uttarakhand. And climate change will continue to increase the forest fire with much stronger warming and sharp decline in rainfall between particularly late winter and early spring. So we are going to face more and more frequent and severe event of forest fire in coming year if we don't think about it. At the same time, it is we are proud of that India has developed scientific capacity to assess the forest fire, vulnerability, to map the active forest fire zone, the real-time monitoring of the forest fire. Very good, excellent. However, our capacity to respond to the forest fire when we come on the ground is extremely poor and low. So there is no match between the scientific capacity we have developed and our situation on the ground. So how to bridge up this gap is a very important. So unless and until we are able to bridge up this gap, the available scientific potential and our real condition dealing with the forest fire, so we will not be able to control, to mitigate the risk of the forest fire in coming year. If I have time, I will add something to this at the end of my discussion. The next slide is in front of you, sir. Hello? Yes, sir. Yes, sir. It's okay. Farming and so we are surviving somehow on our farming system in the mountain region of the world, as we have cultivated land nearly 90 to 50%, and only a very insignificant proportion of that, say 11%, is under irrigated. Nearly 80% of Uttarakhand is mountainous and hilly, but more than 80% of its agricultural land is located in Tarai and Babar region, and with per capita availability of farmland and mountain is less than 0.2 hectares. So the man-land ratio is declining continuously in the mountainous part of this put a very big question mark on the sustainability of the farming and food system in the mountains. Food production is just 35% of the annual requirement. So we are facing a food deficit of 65%, and its contribution to the GDP of the state is merely less than 3%. Household, see this point is very important. Household income from agriculture varies from 15% to 41% in different districts of the Uttarakhand, with 9 to 15% of the agricultural land. At the same time, the off-farm income, the income coming from the other sources, is as much as 31% to 53%. It means the agriculture is not viable. We are not have been able to practice the agriculture on a sustainable and viable manner in the mountainous part. Uttarakhand lost 70% of its agricultural land and 11% of the irrigation potential over the past 12 years. And developmental potential in farming here has declined mainly due to depletion of natural resources, loss of ecosystem services, climate change, and climate change induced extreme weather events. Furthermore, Himalaya, owing to its large population, subsistence farming economy, is likely to face severe food crisis, particularly climate change, in coming years. So we need to address this issue, how we can become food secure in the coming year. Despite all that, I am very optimistic that agriculture is going to remain one of the principal economic activities and sector of livelihood in the mountainous part of the Uttarakhand in all times to come. So you can ask me how this, despite all these negative adverse impacts on agriculture, how this agriculture is going to remain a very important prime economic activity. So we can have a discussion at the end of my presentation later on. Okay. The next slide in front of you, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Okay, let us have a quick look on what is the status of food security in the Uttarakhand state. There are four criteria of food security: availability, access, utilization, and stability. But two factors are relevant, most relevant to Uttarakhand: availability and access. Availability means the food production, the local food production, the local food stuff, how we produce from our land. So this food, we face a deficit of 45 to 60% from the local production. So we are not self-sufficient in food production. So as we are facing a food deficit of 45 to 60% every year. So we are not food secure in terms of the local production or on the basis of the availability of food. But we can bridge up this gap. We can balance. We can become food secure if we have access to the food. Means we can have the purchasing power to buy the food from the market. But the purchasing power of the most of the people in the mountainous part of Uttarakhand is not adequate. Means they do not have access to the food. So neither the food availability is there, nor the people have adequate access to the food. As a result, nearly 35 to 45% of the rural population is highly vulnerable to food and nutrition insecurity, and 50% of this population is facing hidden hunger. Hidden hunger means they are getting, somehow they are managing their food, but they are not getting the level of nutrition, the nutritious food they need. So that's we call the hidden hunger. So 50% of the food insecure population is under the grip of hidden hunger in the mountainous part of Uttarakhand. Now I move into the climate change, how this global environmental drivers of change, climate change, is triggering the risk on the forest ecosystem, the agricultural system, and the water system. So I'm not going into the detail of this impact. So the climate change is impacting the forest and habitat, the biodiversity, the pests and diseases. It is reducing the groundwater recharge, drying of streams, and loss of soil moisture. And at the same time, it is triggering the natural risk through the floods, slope failures and landslides, debris and mud flow, river bed siltation, recurrent droughts, forest power, and creating the critical risk of glacial lake outburst growth as we faced in 2013 in the Mandakini Valley and in 2023 we faced in the Sikkim Himalaya. And how the climate change is undermining the socio-economic sustainability of the Himalaya Uttarakhand. So it is causing the water insecurity, decline in food productivity, we are facing frequent crop failure, and we are facing the nutrition and food insecurity, livelihood insecurity, and it is causing a lot of health risk, particularly on the rural community. And the women are the worst affected by the all impact of the climate change, and ultimately it is increasing the trends of the rural out migration. According to the ISRO, you can see the footnote at the bottom. All the mountainous districts of Uttarakhand are highly vulnerable to landslide, and there are as many as 13 glacial lakes have become highly vulnerable due to rise in the temperature in the higher Himalayan ranges, and the incidences of forest fire are likely to increase in coming years. Are you able to see the next slide, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. So these are the few observations which we made with the study conducted with the EC mode, and some observations by the World Bank Group under the Southeast Water Spot. So the Himalaya is warming at the rate of 0.2 degrees per decade. This is on the basis of the interpretation of data that we collected during the last 50 years. And it is expected that the warming will be much stronger in the coming year, and with the sharp decline in rainfall, particularly late winter and early spring season. And winter and spring rainfall declined about 15%, and rainy days also decreased about 10%. There will be more frequent intense rain and less frequent fire in coming year. And frequency of winter, spring, and monsoon drought have increased. We are facing severe drought even in the monsoon season. Even you can see, I am talking to you from Almora, and for the Almora we did not have any substantial rain for the last 15 days.
and we would prepare to experience more intense rainfall and more frequent instant drought in coming year. And we must prepare to face a decline in food productivity by 30% by 2050 due to climate change. And let me talk something about the urbanization has emerged as the major driver of environmental changes in the Uttarakhand and also across the mountains of the developing countries and all across the Himalayan mountain ranges. You create the footprint, very important. The question is not whether or not the mountain should urbanize, whether we need urbanization in the mountain or not. Of course, we need urbanization. But the important question is that how the urbanization should be and where we should allow the urbanization. So we need to decide this is the right time, critical time, where we can allow urbanization, where we can have urbanization and where we cannot have urbanization. And how we can have the sustainable urbanization, how we can steer the process of urbanization in a sustainable manner. Here I would like to point out that Uttarakhand is being the youngest mountain state, is the most rapidly urbanizing Himalayan state of the country. You can read in the table at the bottom in the right hand side that in 2011, the average urban population of Uttarakhand was 26%, and the urban population of Uttarakhand in 2011 was 30%, almost 4% higher urban population was that time. Currently, it is expected that Uttarakhand is having 35% of its population living in the urban area, whereas on an average in the Himalaya, nearly 30% people are at present. So we are a rapidly urbanized state. We need urbanization because urbanization are the nodal center which create the development, which create the employment, which create the infrastructure and disseminate the process of development in their vast development. So we cannot develop without urbanization. But do we really need the urbanization the way it is going now? So we need to have a sustainable urbanization. Now we see what are the recent trends of urbanization in the Uttarakhand Himalaya. The urbanization are now being pushed either to the fragile, sensitive biodiversity and forest areas in the higher elevation with the growth of tourism, with improved road connectivity, either the urbanization being pushed down to the river valleys, particularly the floodplain, the vast, fertile, agriculturally colonized terraces, terrace 1, terrace 2. सर स्क्रीन भी और साउंड दोनों गए। आवाज नहीं आ रही सर। आउट हो गया, आउट हो गया। Mic off is सर आप बोलो, आपको नहीं होगा। mic off है सर आपका।
बाहर हो गए वो। और किसी की नहीं है। है नहीं है वो। आपका माइक ऑफ है सर। नहीं स्पीकर पे लगा लीजिए। दिख रहे हैं। हाँ दिख रहे हैं। कॉल करो सर। हो गया। These technical constraints are beyond my control, sir. Sorry. यस सर, यस सर, यस सर। आप समअप कर दीजिए, समअप। हेलो हेलो। आप समअप कर दीजिए सर, आप समअप कर दीजिए। कितना कितना समय और देंगे? अब मेरे को लगता है कि और एक स्पीकर और हैं। हेलो। एक स्पीकर और हैं और फिर कुछ और लोग भी बोलेंगे। नहीं, मुझे पता है एक स्पीकर और है, लेकिन थोड़ा सा आप मुझे बताइए। कितना समय मैडम आप देंगी, प्रोफेसर अनीता मैडम? सर 5 or 10 minutes only. ठीक है मैडम, विद इन नेक्स्ट 10 मिनट आई विल फिनिश, आई विल रैप अप। ओके सर, यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। आपको ये स्लाइड दिखाई दे रही है बार डायग्राम वाली? यस यस यस। Okay, so as urbanization is growing in Uttarakhand, it is also increasing the environmental as well as socio-economic inequalities within the town. What does this mean? The population living in the landslide-prone areas has increased over the past 20 years. The people living in the floodplain areas also increased. The people living below poverty line in urban areas also increased. And there are large number of slums are coming up in a small towns like Nainital. Nainital with a population of 50,000 only, we have 16 slums. So so these environmental as well as socio-economic inequalities are increasing the large proportion of urban population to the emerging risk of climate change and climate change induced disaster. So we need to think how to reduce these growing environmental and socio-economic inequalities in our urbanization. More than 60% urban built-up area in Uttarakhand is located on environmentally unsafe area. In a town like Mussoorie, the built-up area in unsafe zone increased as much as by 100% during the last 30 years. In town Srinagar and Bagasar, more than 45% population now live in the floodplain. We forget rivers, but rivers do not forget their flows. 20 years, 200 years, 300 years, they return their original course. So we should not forget the river, the course of the river, the trends of the river, the natural behavior of the river. The next slide is in front of you, sir. The urban exposure. Yes, sir. Yes. Urban exposure. Yes, yes. Okay, so these are some findings which I am sharing with you based on the project which we implemented with the NASA and with the Yale University in USA with the support of the NASA. So there are very important findings. The built-up area in the entire Hindu Kush Himalaya increased from 589 square kilometer in 1991 to 2067 square kilometer in 2021.
and the Indian Himalayan region contributed 62% of this growth. Urban area exposed to landslide increased by 470% over the last 3 decades. More than 60% urban settlements above 2,000 meters in Himalaya are exposed to landslide. Urban built-up area exposed to landslide is growing by almost more than 12% per year. And climate change is triggering the risk of this vast urban exposure in higher mountain region, including the Uttarakhand Himalaya. So I'm not going to, I'm skipping this slide. Okay. And now I'm coming to a very important point, that is the tourism. Hello, sir. Are you able to see the new slide? Hello? Yes, sir. Yes, sir. All we agree that tourism is one of the major sector of the Himalaya, particularly the state of tourism. We have vast, immense tourism potential in the country. But the way tourism is growing in a manner of mass tourism and expanding tourism, so this tourism is triggering the process of unplanned urbanization in the Himalayan mountain. It is creating the increasing demand of infrastructure, and it is creating the heap of garbage almost all across the Himalayan towns. So we need to think, do we really need this tourism, or we need some other kind of tourism? And because the rapidly growing tourism has emerged as a major driver of environmental change in Uttarakhand, it has emerged as a major factor of urbanization and depletion of the natural resources of the Uttarakhand, and mass tourism has driven significant urban expansion, accelerating the risk of climate change and destruction of nature in Uttarakhand. And 70% of the fast-growing urban center in Uttarakhand are also the major tourist town of the state, and it is exposing the risk of landslide, trespass, and damaging the natural ecosystem. And in compare, if we allow tourism to go in the same manner, so it will increase the demand, additional demand of water, transport, energy, infrastructure, accommodation, and intensify the mountain. So I'm quite sure nobody would agree that we need unplanned, unregulated, unsystematic tourism. But we need what we need. We need the sustainable tourism. We need the ecological tourism. We need responsible tourism. We need the tourism which could conserve the nature, the environment, the natural resources, at the same time promote the economic growth and protect the culture, tradition, and the traditional knowledge of our society. So that can be brought, that tourism can be attained through the sustainable tourism. And there was a lot of discussion that this morning I was reading in the newspaper that Uttarakhand is the first Himalayan state in the country with landmark of 6,000 homestays. So homestay is a different concept, and we have not been able to implement the actual concept of homestay in the Uttarakhand. If you see, look at homestay, how they are growing, coming all across the mountain, they are as good as the hotel and the resort. The homestay means the poor people in the mountainous region spare one or two of their rooms. They have an attached toilet and provide the food which they normally cook in their kitchen to tourists, entertain the tourists, and so that they are able to generate income for their livelihood. So this is a pro women-centric, community-centric, and the people-centric idea of the tourism. So this idea has completely failed when we implemented the homestay tourism in Uttarakhand. We need to reinvent it, rethink about that, how we can promote the tourism. So we need to go for the sustainable tourism. So you see the picture. Are you able to see the picture of the Madhuri town, sir? Hello? Yes, sir. Yes. Okay, so how the urban growth is coming up on the steep slope of more than 60 and 70 degrees, and there are hotels, resorts, guest houses, including some of important government buildings. And here see, in 18 September 1980, the main part of the town of the Nainital was totally devastated by a massive, huge, devastating landslide, killing more than
200 British. And now you see, so we have forgot everything. We forgot the fragility, the sensitivity of the mountainous climate. So that this most of this construction, which you are seeing this picture of 2024, is tourism-driven infrastructure development, tourism-driven construction. So do we really need this tourism in Uttarakhand, Mussoorie and other time which are going the main natural attraction of that time? The answer, I think quite sure, the answer is no. So think about the sustainable tourism, the eco-tourism, the responsible tourism, the nature-oriented tourism. So now what we can do, what is the way? There are several suggestions, many opinions. I am summarizing the few suggestions which are quite relevant to my personal observation and experience in the present day context. First, we need to prepare how we are going to respond to the climate change, how we are going to evolve a mechanism to cope up with the climate change induced natural disaster. So we need to improve access of the local people to the climate information and strengthen climate monitoring network. We need to have a network of climate services so that people are able to take their own decision. They are able to understand how the climate is behaving and what is the trend of climate to integrate climate change adaptation. It's the overall development policy of the state. The risk reduction and climate change adaptation should be part of the agriculture, should be part of the forest, should be part of the road construction department, should be part of the irrigation and water supply department, should be part of the health department. So that's what we call the main streaming of the climate change adaptation and disaster reduction. Yesterday today, the disaster management and climate change adaptation, particularly in Uttarakhand, is considered as a stand-alone activity, stand-alone program. So it is not helping us. So it's not integrated into the overall development process of Uttarakhand state. Particularly, I underline at watershed level, to more scientific if we integrate the development, climate change, disaster at the water level. And we need to, the Uttarakhand is planning to develop 13 more towns and 13 more tourist destinations. So before we go over that, we need to have the environmental impact assessment and land use planning of each and every emerging urban town in the state and the tourist destination in the state. And we should ensure the people are delivered the environmental justice and the socio-economic disparity growing in the towns should be reduced. And rapidly expanding mass tourism should be replaced by community-based, women-centric, sustainable tourism based on the carrying capacity and environmental assessment of the tourist destination. And we need to have an integrated farming system to improve the community access to food and nutrition. The integrated farming system means we are conserving the natural resources, land, water, forest, biodiversity. We are also producing a variety of crop, vegetable, fruit, and selling them to the market, buying the necessary things in the market. So we need to have an integrated system. We are having that thousands of years back. The mountain people have developed and adopted the integrated farming system, but that has collapsed. So we need to reinvent that. And the forest governance should be linked with the rural livelihood improvement generation, enhancing rural income and improving community food and nutrition security. Because without people's involvement, without community participation, the forest department and government agencies cannot control and mitigate the risk of the forest fire in the state. And the rural community would not participate in any program related with the conservation and management of the forest and mitigation of forest fire unless the forest governance, the forest management is able to provide them employment and improve their rural income. So we need to reconnect the people with the forest by linking the forest with the income generation, with the livelihood improvement. And let us empower the people of the Himalaya, Uttarakhand, strengthen them to take their own decision, allow the people of the Uttarakhand, particularly women, to play an important, significant role
in decision making, in planning the process of development and conservation, in planning the decision making process at all levels with 100% transparency and with 100% accountability. Thank you so much for allowing me a bit of extra time, and I would also like to seek your very, very sincere apology for crossing the time limit set by because of mainly that is because of technical constraints which were beyond my control. मैं आपका आभारी हूँ, आपका कृतज्ञ हूँ, अनुग्रहित हूँ कि आपने मुझे अद्वितीय अवसर और सम्मान प्रदान किया, अपना महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया कि मैं अपने अनुभव, अपने विचार, अपनी सोच निष्कर्ष आप लोगों तक बांट सकूं, पहुंचा सकूं। आइए आने वाले दिनों में हिमालय को बचाने के लिए, यहाँ के संसाधनों का संरक्षण करने के लिए और यहाँ के सतत और संतुलित विकास के लिए मिलकर के काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आयोजकों के पास समय है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार, नमन, सादर अभिवादन। Thank you, sir. Thank you, sir. Uh, Now, I would like to invite the keynote speaker, Professor A.K. Bayani. Professor A.K. Bayani is MTech, MPhil and DPhil. DPhil from HNB Gadwal University and MPhil from JNU. Joined DBS College in 1978 and retired as professor and principal in 2019. More than 100 research paper and also write and popular science. 12 research scholars have got a doctorate degree in your supervision, wrote one book titled Dimension of Himalaya Geology, presently chief editor, quarterly popular science magazine Vigyan Par Charcha. Now I would like to invite keynote speaker Professor A.K. Bayani to kindly deliver his lecture. Professor A.K. Bayani, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. I am not able to share my screen. Yes. Second speaker. Plastic refreshment इनका माइक ऑफ है सर आपका।
स्क्रीन सेंड है सर अब। Yes, sir. स्क्रीन विजिबल है सर। Yes, yes. The presentation is in fine mode. No need to on screen. So yeah, you can continue, sir. It's okay. Fine. नहीं चल रहा है कुछ ऐसा, दिख ही नहीं रहा है। माइक ऑफ है। हाँ वो माइक ऑफ है सर आपका, माइक ऑफ है। आवाज नहीं आ रही। समस्या है ये। पहले सर माइक ऑन करते हैं, इसके बाद कुछ करें।
है नहीं है सर, अब आए हैं। अब आप बोला उन्होंने भाई। राजेश फोन करके बात कर ले। आ गए हैं। आगे स्क्रीन आगे सर, ठीक है, स्टार्ट कर दीजिए। स्क्रीन आ गई? हाँ आगे सर। Oh, I'm really sorry because I'm not expert in this. Anyway, let me कोई नहीं begin. सर, कोई नहीं सर। No problem, Yeah. sir. First of all, I would like to thank Professor Kamlesh Kumar when he invited me for this lecture. Actually, when I read the name of the society, the Central Geographical Society of Central Himalaya. To a geologist, Central Himalaya is backbone. In the similar way, when I found that Professor Kamlesh Kumar is founder of the society, so he is also a backbone of the society. As far as Professor Kamlesh Kumar is known to me, when I joined in 1978 DVS College, he used to come to Professor Nityanandji. He was our famous doyen in geography in all over Garhwal area and Uttarakhand area. And there probably I met him first time, either in connection of his PhD or he was writing a book along with Dr. Nityanandji, Holy Himalaya. So since then he is known to me, and then I was in touch with Dr. Rajesh Bhattji for this. So after deliberation, we decided to talk on what, why, and how long. हिमालय क्या है, हिमालय क्यों और हिमालय कब तक रहेगा। जहां तक हिमालय का सवाल है, जब हिमालय का नाम हम लेते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई एक जैसा कॉन्टेक्स्ट होता है उस हिसाब से हमारे माइंड में कंसेप्ट आते हैं। और जैसे अगर हम रिलीजन की बात करें तो पता चलता है यहाँ पे देवभूमि है, अच्छे अच्छे देवताओं और भगवानों के मंदिर हैं। जब पॉलिटिकल बात करते हैं तो इमीडिएटली माइंड में इंडिया चाइना बॉर्डर या इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर आ जाता है। इसी तरह से अगर सोशल कॉन्टेक्स्ट में बात करें या एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमको ऐसा लगता है कि हिमालय ग्लेशियर्स आर रैपिडली मेल्टिंग, डिफॉरेस्टेशन इज टेकिंग प्लेस. So there are different meanings of Himalaya. And as far as our word is concerned, the Himalaya is part of the one mountain chain that is known as Alpine Himalayan mountain range. There are in fact, in modern world, there are two mountains. One is Circum-Pacific, that is running all around the rim of the Pacific. This mountain is 60,000 kilometers long, and nearly 80% seismic energy is reached by this. The another mountain is the Alpine Himalayan orogenic belt. This is like this, and in bigger diagram, this is like this. So it is highly irregular, curvaceous, and somewhere wide, somewhere narrow, then irregular in shape. Alpine Himalayan mountain range is known by thousands of different names, but the important name are I have given in this slide. It is traces of Alpine Himalayan range is also present in the Sierra Nevada region of America. It is because before the continental drift or plate tectonics, all the continents were united and the continuity of the tectonic forces was there up to part of the very small part of the America. Then it is also developed in Africa, then Europe. There are many mountains in Europe where they are known by different names. And then between Europe and Asia, it is known as Caucasus.
In Asia, again, there are tens of different names for this mountain, and all these names belong to particular geographic region. And within these names, there are different local names are also there. So this is the Andes mountain. It is the world's largest mountain chain, which is more than 9,000 kilometer long and 200 to 700 kilometer wide. And this is also the product of same forces through which the Himalaya was produced. And there is a lot of difference between Andes and Himalayan region. Here, no glacier is more than 10 kilometer long, and the tallest mountain is this 6,971. In comparison to Himalaya, there are hundreds of different peaks which are more than 7,000 meter in height. And Himalaya has got much more diversity and than the Andes. This is the Himalaya. When we view from the satellite, this is the satellite view of the Himalaya, and here we see the Himalaya is a mountain running like this, and it is abruptly changing its direction here and also here. So these are the two bands, and in these two bands, Himalaya is developed. This is another view where we can see the glaciated area here, and then mountain chain like this, and again there is a turning point of Himalaya here. And if we see, if we move from the west, east to west, then we find that width of the Himalaya is increasing, and here somewhere Pamir Knot is there, from which the several mountains are radiated out. All these are the results of tectonic forces. Now, when I said that Himalaya has got no particular meaning in our mind, so when we compile the different definitions of the Himalaya, then politically when we thought about the Himalaya, then it is an international mountain range जो China, Myanmar, इंडिया, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में डेवलप हुई है. Since political definition is there and since it is the mountainous region, so the border of the mountain in many places is not clear and it is always matter of conflict. Geographical definition of Himalaya was first time given by Burrard and Haddon in 1907. And according to geographical definition, the old geographical definition, the Himalaya mountain is ranging between the two rivers, that is Indus and Brahmaputra, west and east. And in the north, there is a indistinct boundary, that is the Tibetan Plateau. And in the south, the plain of Indus, Ganga and Brahmaputra. First time, the Haddon and Burrard said that its length is 2,400 kilometers long. It is curved mountain and it is 150 to 300 kilometers wide. Then the modern definition or elaborate definition of geography of Himalaya is this. It is surrounded by the Iranian plateau in the west, Hindu Kush, Karakoram, Pamir ranges in the northwest, Tibetan plateau in the north, Indo-Chinese peninsula in the east, and Indian subcontinent in the south. So it is a very comprehensive definition. And coming to the geological definition, हिमालय एक ओरोजेनिक माउंटेन है जिसके अंदर काफी डिफॉर्मेशन हुआ है और यह ज्योग्राफी से लिया हुआ कंसेप्ट है कि इंडस और ब्रह्मपुत्र के बीच के अंदर ये मौजूद है और साथ ही साथ इसका जो नॉर्थ है वो क्लियरली डिफाइंड हुआ पहली बार, वो है इंडस ऊंचा जोन और साउथ में इसका कॉन्टेक्ट एलुवियल प्लेन और माउंटेन के साथ है. तो एक वेरी क्लियर डेफिनेशन केम फ्रॉम द जियोलॉजी where north-south boundary is fixed and east-west boundary was already drawn by the river Indus and Brahmaputra river. Then this definition was not sufficient because the character of Himalayan terrain, particularly deformation, metamorphism, rocks, topography, they are extending beyond this definition. So tectonics has got slightly different definition. वो कहती है कि यह इंडस और ब्रह्मपुत्र से भी थोड़ा आगे निकला हुआ है और इसमें इसका नॉर्थ में इसका कॉन्टेक्ट सूचा जोन के साथ है जिसका नाम हमने इंडस सूचा जोन दिया है और साउथ में इसका कॉन्टेक्ट ग्रेट एलुवियल प्लेन ऑफ रिवर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. नाउ दिस प्लेन इज ए वेरी रिमार्केबल एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेन formed by the mountain sediment.
now question comes that क्या ये जो प्लेन है हिमालय से बना हुआ है, तो हिमालय का मटेरियल इसमें आया है, तो ये हिमालय का पार्ट नहीं है? तो कई लोगों का व्यू है दिस इज द पार्ट ऑफ द हिमालय, बिकॉज ऑल सेडिमेंट्स फॉर इंडो गंगेटिक प्लेन, जो कि पाकिस्तान से लेके आसाम तक है और साउथ में अरेबियन सी से लेके बे ऑफ बंगाल तक भी है, और ये इसका डेल्टिक रीजन भी शामिल है इसमें। तो और साथ ही साथ वो हिस्सा हिमालय का नॉर्थ का जहां पर इंडियन प्लेट तो खत्म हो जाती है और यूरेशियन प्लेट स्टार्ट होती है, वहां पे भी क्योंकि हिमालय जैसे ही चीजें मिलती है, तो उस पूरे सिस्टम को इन्होंने हिमालयन सिस्टम नाम दिया। तो हिमालय सिस्टम में ट्रेडिशनल हिमालय जो ज्योग्राफी और जियोलॉजी का है वो तो आता ही है, साथ में इंडो गैंजेटिक प्लेन भी आता है, डेल्टिक रीजन भी आता है, और ट्रांस हिमालयन रीजन काराकोरम और उसके नॉर्थ वाला एरिया भी इसमें आता है, क्योंकि दे हैव गॉट सिमिलरिटी और सेम ओरिजिन। एक अनदर टर्म यूज की गई ग्रेट हिमालयन सिस्टम। ग्रेट हिमालयन सिस्टम में सवाल यह कि हम हिमालय को क्या इंडो गैंजेटिक प्लेन या डेल्टा तक ही सीमित रखें, तो उन्होंने कहा नहीं, हिमालय का जो प्रोडक्ट निकला है, सेडिमेंट निकला है, वो गंगा नदी के या ब्रह्मपुत्र नदी या इंडस नदी के थ्रू बे ऑफ बंगाल में भी गया है और अरेबियन सी में भी गया है, और वहां पे जाने के कारण वहां पे जो सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ है, वो सेडिमेंट क्योंकि हिमालय का है, तो ग्रेट हिमालयन सिस्टम को हम वहां तक ले जाएं। तो जो गंगा नदी में डिपॉजिट हुआ और ब्रह्मपुत्र नदी में डिपॉजिट हुआ, उससे जो जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर बना, उसको हम गंगा फेन और इंडस फेन बोलते हैं। तो जहां तक गंगा फेन और इंडस फेन की बाउंड्री है, वहां तक हमारा सिस्टम, हिमालय का सिस्टम एक्सटेंड हुआ। तो ये जो डायग्राम है, इसमें हिमालय के अलावा हिमालय नॉर्थ में है और ऑरेंज कलर में ये इंडो गैंजेटिक प्लेन है। इंडो गैंजेटिक प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, goes like this, it is inverted in U shape. Here is its length is more than 600 kilometer. Here it is more than 2000 kilometer. Here it is more than 350 kilometer. So it is a very, very vast plain and unbelievable amount of sediment deposited in this. Now, in this, two things are shown. One is the Indus Fen, and within the Indus Fen it is like this, and Ganga Fen. They are going much beyond the equator. Ganga Fen is going much south of the equator, and Indus Fen is just coming to the south of the India, that is the कन्याकुमारी तक इसका एक्सटेंशन है। और ये जो लाइनें हैं, ये सबमरीन कैनियंस हैं, इनके अंदर डेवलप हुई है। So this is the world's largest submarine canyon in Bengal Fen, and another submarine canyon, very large, number 2, it is the Indus Fen. Now this is the Indus Fen, and it is roughly conical in shape and a well-developed system of mountain and fen sediment is seen, and here the different ridges are seen. This is the Ganga Fen. Ganga Fen में हमको ये थोड़ा सा ब्रोकन लगता है, और बीच में ये 90 डिग्री ईस्ट रीज आ जाने के कारण इसको दो हिस्सों में भी बांट दिया गया है, गंगा फेन एंड निकोबार फेन। बट मेन सेडिमेंट कम्स फ्रॉम द गंगा रिवर, and Nicobar Fen में some sediment has come from the Myanmar rivers. And now this is the complete system of Himalaya, which is extending from Indus Fen, coming to the land, then coming to the Himalaya, covering Indo-Gangetic Plain, then going up to east of the India, and then coming down to the Ganga Fen. So this is the complete Himalayan system. Now we are coming to the divisions of the Himalaya. As I have said that Himalaya is probably first time divided by the Burrard and Hendon, and they divided Himalaya into 4 categories: Assam, Nepal, Humayun and Punjab. These are the transverse division based on the river system. And there is also mention in Mahabharata that Himalaya, Laghu Himalaya, Madhya Himalaya, Uch Himalaya, like terminology were used in Mahabharata, but they were not clearly explained what is the Laghu Himalaya, what is the Madhya Himalaya, what is the
higher Himalaya. So moving to the next slide, coming to the geological divisions from south to north, these are the important divisions of the Himalaya plain of Indus, Ganga and Brahmaputra. Then in between these two, there is a tectonic contact or fault boundary, which is known as main frontal thrust. Those who are living in Dehradun, they can see very clearly when they are coming from Mohan side to Dehradun side, then they find there is abrupt rise in the mountain. So that abrupt rise in mountain is because of this main frontal thrust. And when we moving towards the Mussoorie side, then here the contact is known as main boundary fault. Again, there is abrupt rise. Towering Mussoorie hills are visible from Gulf area of Doon Valley. Same is everywhere, wherever you go, where this thrust fault is present. Then we have got higher Himalaya, which is also known by higher, central, and great Himalaya. In between lesser and higher, here we have boundary by main central thrust. Main central thrust is the responsible for the bringing Himalaya on this earth. It is that thrust which brought the 30 kilometer deep rock on the surface. Then north of the Great Himalaya, we have got the Tethyan Himalaya. This Tethyan Himalaya, it was deposited in Tethys Sea, which we are all familiar with. And these rocks are 900 million year to 45 million year old. So imagine such a long time of deposition in one sea, and where the Tethyan Himalaya ends, Indus Sangpo Shyok and Indus Sangpo Susha zone comes. Now this kind of situation, particularly two sutures, Shyok Suchar and Indus Suchar, they are present in the Ladakh, and in rest of the area, Ladakh to the east of Ladakh, Indus Sangpo, only one suture zone is present. And beyond that, Trans Himalaya, that is made up of Eurasian plate, or we can say Karakoram microplate, that is the part of the Eurasia. And rest part from here to here, it is made up of Indian plate. And this is the place of joining the two plate, Indian plate and Eurasian plate. So these are the different divisions. Now in this map, we can see the different divisions. The yellow color is Outer Himalaya or Shivalik Himalaya. Orange color is Lesser Himalaya. And light blue color is the Higher Himalaya. Green color is the Tethyan Himalaya. And red color is the different kind of igneous rocks. And in most of the textbook, when we see this diagram, then we find parallel belts. But it is not parallel. Somewhere it is thin and somewhere it is thick. Now, if you see the Kashmir region, here the Tethys is directly in contact with the Shivalik, that is the Outer Himalaya. The two divisions, that is the orange and yellow and orange is missing. This is because somewhere the belt is thin and somewhere it is thickens. And here, from here to here, a 600 kilometer long igneous rock body, which is known as Ladakh granite, is present. And from north of this, we have got Karakoram microplate or Eurasian plate. Here also, the Eurasian plate is present. So then this Tethyan Himalaya, here it is shown as a blue strip, but it is also occurring in the broken forms. Here is one form, there is another form, here is the third form. And as far as India is concerned, we have got only Outer Himalaya, Lesser Himalaya, and Higher Himalaya in most of the places. And very little part of our Uttarakhand or Himachal Pradesh is made up of this Tethyan Himalaya. And that too incompletely developed in India, rest part is developed in the Tibet. However, a bigger part is developed in the Jammu Kashmir and Ladakh region. And again, this Tethys is present beyond Ladakh also. So that is known as Trans-Himalayan Tethys sequence. क्योंकि ये हिमालय के बाहर है और वहां पे भी टेथिस है, तो इसलिए उसका नाम ट्रांस हिमालयन
टेथिस दिया गया। सो दिस टेथिस सी it was present before the breaking of the Gondwana land, or before the breaking of the Pangea. Now, outer Himalaya. The outer Himalaya is formed. Outer Himalaya and Indo-Gangetic plain is formed by when Himalaya rose to prominent height. से 20 मिलियन ईयर्स बैक या 2 करोड़ साल पहले जब हिमालय ने हाइट गेन शुरू करने लगा, तो उस वक्त आइसोस्टेसी का डिस्टरबेंस हुआ और उस राइजिंग माउंटेन के फ्रंट वाला हिस्सा एक डिप्रेशन में बन गया, और उस डिप्रेशन को हम जियोलॉजी या ज्योग्राफी में फोर डीप कहते हैं। उस डिप्रेशन में सेडिमेंट जमा होना शुरू हुए। ये वो सेडिमेंट थे जो हिमालय के इरोजन और वेदरिंग से निकले थे। इस डिप्रेशन में सेडिमेंट जमा हुए, काफी टाइम तक जमा होते रहे, एंड ए टाइम केम व्हेन दिस डिप्रेशन वाज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स। वन इज दिस इज द शिवालिक हिमालय एंड देन इंडो-गंगेटिक प्लेन, और इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री निकली। वो बाउंड्री थी मेन फ्रंटल थ्रस्ट की। तो अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द Shivalik rock or outer Himalaya and sediment of Indo-Gangetic plain. And कई लोगों का ऐसा मानना है क्योंकि हिमालय की ग्रोथ साउथ में हो रही है, तो धीरे धीरे इंडो-गंगेटिक प्लेन भी उठकर माउंटेन का पार्ट बनेगा, बट दैट may take crores of years. So that is the future problem, and at present both Indo-Gangetic plain and outer Himalaya is the part of the फोर डीप डिपोजिशन। जब ये डिपोजिशन भर गया तो फिर सेडिमेंट गंगा फेन में जाने लगा। देन कमिंग टू इनसाइड लेसर एंड हायर हिमालय, ये दोनों जो डिवीजन हैं हिमालय के, जो बड़े इंपॉर्टेंट डिवीजन है और करीब 150 से 200 किलोमीटर वाइड हैं। ये एक तो बहुत पुरानी रॉक से बने हुए हैं जो 240 करोड़ से लेकर 55 करोड़ साल तक की पुरानी है, और इनमें ये टेक्टोनिकली यानी इनकी बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से फोल्डिंग फाल्टिंग हुई है, और ये सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक तीनों के बने हुए हैं। अब इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो हैं इनकी एग्जैक्ट एज काफी टाइम तक हमें पता नहीं थी, क्योंकि इन रॉक्स के अंदर कोई फोसिल्स नहीं मिलती थी, कोई जीवाश्म नहीं मिलते थे। अगर जीवाश्म मिलते होते तो हम जीवाश्म के आधार पर इनकी आयु का निर्धारण कर सकते थे, परंतु बिना जीवाश्म के दूसरे तरीकों से इनका आयु का निर्धारण करा गया, और उससे पता चलता था कि ये काफी पुरानी है। और इनमें से बाद में कुछ एरिया ऐसे थे, जैसे सतंगल का है, ऋषिकेश से जब आगे चलते तो सतंगल आता है, या लेंसडाउन कोटद्वार का एरिया है, वहां पे पता चला कि यंग एज की सेडिमेंट्री रॉक्स भी प्रेजेंट है। वो रॉक्स फोसिलिफेरस है, तो उसको मराइन ट्रांसग्रेशन नाम दिया गया। तो मराइन ट्रांसग्रेशन का मतलब ये हुआ कि समुद्र एक बार फिर से हिमालय में आया, थोड़ा टाइम के लिए आया और वापस चले गया, और उसने जो भी उस थोड़े टाइम में डिपॉजिट करना था वो मराइन ट्रांसग्रेशन के नाम से जाना गया। एंड देन हायर हिमालय, ये जैसा मैंने शुरू में बोला था कि ये तो 25-30 किलोमीटर गहराई से आया है, तो इट ट्रूली कॉन्स्टिट्यूट द बैकबोन ऑफ हिमालय। देन इंडस फ्यूचर जोन, इंडस फ्यूचर जोन जो है ये हिमालय के नॉर्थ में है। यहाँ से प्लेट अंदर जाती है और दो प्लेट आपस में मिल जाती है। और जो टेथिस का कंसेप्ट था ये एडवर्ड स्वेस ने 1893 में दिया था। उस वक्त उसने बड़ा सिंपल कंसेप्ट दिया था कि जो गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया है वो तो आपस में जुड़े हुए हैं, उसको उन्होंने पेंजिया नाम दिया था। और पेंजिया के ऊपर एक पतली सी सी की पट्टी है जो कम गहरी है, कम चौड़ी है और लंबाई में काफी अधिक है। और इस सी के अंदर जो सेडिमेंट जमा हुआ है वो आज हमें प्रोटोजोइक से यूरोसिन एज का देखने को मिलता है। और इसके सी के डिफॉर्मेशन से, सी में अपलिफ्टमेंट होने से फिर ये रॉक्स हमको बाहर दिखने लगी थी। तो टेथिस का जो कंसेप्ट था एडवर्ड स्वेस का, ये 1893 में दिया गया था। इसके बाद इसमें काफी मॉडिफिकेशन हुए
लोगों ने इसको एक अगले डायग्राम में बताऊंगा कि ये उतना सिंपल कंसेप्ट नहीं था जितना श्रेष्ठ जी ने दिया था। देन इसके साथ 2 सूचर जोन, श्योक सूचर जोन, ये नॉर्थ लद्दाख में प्रेजेंट है। श्योक रिवर के अलॉन्ग इसका डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ से पहली बार इंडिया यूरेशिया के अंदर उतरा था। और उसके बाद दूसरा जो सूचर जोन है इंडस सांको जोन। अब इंडिया जब यूरेशिया से टकराया था तो हुआ क्या था कि इंडिया का नॉर्थ हिस्सा यूरेशिया से टकराया, तो एक छोटा सा पोर्शन टकराया और इसके बाद धीरे 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 इंडिया रोटेट होता हुआ इस तरह से क्लोज हुआ। जो सी था वो क्लोज हुआ। तो सी की जो क्लोजिंग थी, 33 सी की क्लोजिंग, ये श्योक सूचर से शुरू हुई और काफी टाइम बाद जाके खास करके ईस्टर्न डायरेक्शन में काफी टाइम बाद जाके ये क्लोज हुआ, मतलब उसमें सेडिमेंट जमा होना बंद हुआ। और ये दोनों सूचर जोन अलग अलग तो कश्मीर में है या लद्दाख में है, और जब हम उस ईस्ट में आते हैं तो ये दोनों मिलके एक हो जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि इट इज ए ट्राइडेंट शेप सूचर जोन। और ट्रांस हिमालय टर्म हम उसके लिए यूज करते हैं जो इंडियन प्लेट के बाहर है। तो ट्रांस हिमालय में हमारे पास काराकोरम आता है, हिंदू कुश आता है, और उधर के नॉर्थ के जितने हिस्से हैं वो सब ट्रांस हिमालय में आता है। और जब ये क्लोजिंग का काम चल रहा था कि समुद्र दो कॉन्टिनेंट टकराए, उस वक्त या थोड़ा उसके पहले से ये लद्दाख ग्रेनाइट बना, जो 600 किलोमीटर लंबा और 80 से 120 किलोमीटर चौड़ा है। इमेजिन कीजिए कि कितना मैग्मा बना होगा। अब सवाल यह है कि हिमालय जिस जगह पे है वहां क्यों है। तो मतलब हिमालय की ओरिजिन क्या है। ओरिजिन की जब बात करें तो नंबर ऑफ हाइपोथेसिस वर गिवन। से फॉर एग्जांपल जियोसिंक्लाइन हाइपोथेसिस, इसमें ये कहा गया कि पहले अर्थ के अंदर एक बेसिन बनी या सेडिमेंट डिपोजिशन के लिए जगह बनी और उसमें सेडिमेंट जमा होता रहा। जमा होते होते इतनी थिकनेस बढ़ गई कि वो अल्टीमेटली सेडिमेंट ने खुद ने विद्रोह कर दिया और ऊपर उठ के आ गया। ब्लॉक फॉल्टिंग में यह है कि बेसिन रहा होगा अपनी जगह पर उसमें वर्टिकल फॉल्ट डेवलप हुआ, वर्टिकल फॉल्ट के अलॉन्ग अपलिफ्टमेंट हुआ, उससे ये ऊपर आया। शीट टेक्टोनिक्स में ये कंसेप्ट प्रोफेसर केपी रोडे, इंडियन जियोलॉजिस्ट थे, उनका दिया हुआ है। ये काफी पुराना कंसेप्ट है और इसमें यह कहा गया था कि एक के ऊपर एक 7 लेयर्स थी और एक के बाद एक धीरे धीरे ये लेयर निकल के डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड होने लगी। और जब स्प्रेड हो गई तो उनके अंदर डिफॉर्मेशन से ये हिमालय बना। एक्सपेंडिंग हाइपोथेसिस ये कॉन्ट्रैक्शन के बिल्कुल अपोजिट है। कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस कहती है कि अर्थ सिकुड़ रही है, एक्सपेंडिंग अर्थ कहती है कि अर्थ का एरिया बढ़ रहा है या अर्थ का वॉल्यूम बढ़ रहा है। और इसमें बढ़ने से जो चेंजेस आए हैं उसके कारण हिमालय बना है। देन कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस, ये बड़ी फेमस हाइपोथेसिस है, आर्थर होम्स ने इसको दी थी। और इस हाइपोथेसिस में ये बताया कि अर्थ के अंदर कोर मेंटल की बाउंड्री से कन्वेक्शन करंट मैग्मा के पॉकेट्स ऊपर की तरफ राइज करते हैं बड़ा स्लोली, और जब ऊपर आते हैं तो उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो खत्म हो जाने के कारण वो क्रस्ट को पार नहीं कर सकते, तो वो क्रस्ट के पैरेलल मेंटल में चलने लगते हैं। उससे क्रस्ट में तनाव उत्पन्न होता है और दबाव उत्पन्न होता है और उसके कारण हिमालय बनता है। ओशनाइजेशन हाइपोथेसिस ये रशियन जियोलॉजिस्ट लोगों ने दी थी। उनका कहना यह था कि अर्थ जो ओशन है वो साइमा के बने हुए और उसके अंदर मेल्टिंग हुई और मेल्टिंग के बाद कोई ऊपर हो गया कोई नीचे हो गया, उसके कारण ये हिमालय बना। सर्ज टेक्टोनिक्स ये कहती कि जगह जगह अर्थ के अंदर मैग्मा के पॉकेट्स हैं और उन मैग्मा के पॉकेट में जब एडजस्टमेंट हुआ, आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट हुआ, तो उसके कारण ये हिमालय बना। देन presently ये दो hypothesis, sea floor spreading and plate tectonics, is very popular because they provide logical explanation of many geological features or tectonic features. So most of the people believe in these hypotheses. Now see, before this is the Pangaea and here it was a Tethys Sea, and at Tethys Sea was developed in very narrow basin, and all around this it is surrounded with the Panthalassa Sea, Panthalassa Ocean या sea, whatever it may be.
बट दिस इज द डायग्राम ऑफ 200 मिलियन ईयर बैक, यानी 20 करोड़ साल पहले का है। दूसरा डायग्राम हम देखें, ये डायग्राम, इसमें देखेंगे कि टेथिस ओशन जो है इसको दो हिस्सों में कर दिया गया है, पेलियोटेथिस एंड टेथिस ओशन। ये टेथिस ओशन अभी भी नैरो ही है, पर जो नए डाटा आए हैं या जो नई चीज आई है तो उसमें और इसमें अंतर यह कि यहाँ पर पूरा के पूरे लैंड मास एक थे, ये थोड़ा सा यहाँ पे जो सेपरेट दिख रहे हैं वो इस वक्त कॉन्टिनेंट्स का बिखरना शुरू हो गया था उसके कारण है, और अदरवाइज all land mass were assembled at one point. Now, in this diagram, we can see the continent are spreading. This is even older. So, ये नए डाटा पर बेस्ड है कि ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे सारी लैंड मास एक जगह ही थे, वो उसमें से कुछ बिखरे हुए भी थे। तो नॉर्थ चाइना, साउथ चाइना और इधर ये आइलैंड्स वगैरह जो हैं ये मेन लैंड से दूर रहे हैं, और इन दोनों के बीच में जो ओशन डेवलप हो रहा था वो टेथिस सी कहलाया, और टेथिस के पहले जो ओशन था वो पेलियोटेथिस कहलाया। अब इसमें डिफरेंट टाइम में क्या स्थिति रही है ये बताया गया। 225 मिलियन यानी 22 करोड़ 50 लाख साल पहले ये था हमारी स्थिति। थोड़ा सा सेपरेशन शुरू हो गया था क्योंकि सेपरेशन करीब 240 मिलियन ईयर यानी 24 करोड़ साल पहले शुरू हो गया था। इसके बाद जैसे टाइम पास ऑन होता गया, यहाँ पर लारेशिया अलग हो गया, गोंडवाना लैंड अलग हो गया, गोंडवाना लैंड में भी बाइफर्केशन होना शुरू हो गया और ये टेथिस सी वेल डेवलप शेप में आने लगा। और इसके बाद 100 मिलियन ईयर पे चले तो ये सारे कॉन्टिनेंट अलग अलग जगह पहुंच गए 10 करोड़ साल पहले, और अभी की स्थिति ये है, मतलब हम काफी एक दूसरे से दूर हो गए। तो ये जो कॉन्टिनेंट बनने और बिगड़ने की प्रोसेस है, सुपर कॉन्टिनेंट बनने और बिगड़ने की, सुपर कॉन्टिनेंट में सारे के सारे कॉन्टिनेंट इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद कुछ टाइम तक वो ज्वाइंट फैमिली के रूप में रहते हैं, करीब 200 मिलियन ईयर तक, और फिर उसके बाद फिर ये बिखरना शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस कोई आज की नहीं है, ये 3-4 बार अर्थ पे हो चुकी है, और एक जो साइकिल है सुपर कॉन्टिनेंट बनने से दूसरे सुपर कॉन्टिनेंट बनने तक, जिसमें कॉन्टिनेंट बनेंगे, धीरे धीरे बिखरेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, फिर इकट्ठे होंगे, इस प्रोसेस में करीब 50 से लेके 80 करोड़ तक का टाइम लगता है, 80 करोड़ साल तक का टाइम लगता है। अब इंडिया की बात करें कि हिमालय क्यों है वहां पर, तो हिमालय देखिए, इंडिया पहले यहाँ था, इक्वेटर के भी साउथ में था, कैप्रिकॉर्न के भी साउथ में था, और ये जो इंडिया है इट वाज मच बिगर देन प्रेजेंट इंडिया। इट वाज डबल द साइज ऑफ प्रेजेंट इंडिया। इट इज नोन एज द ग्रेटर इंडिया एंड इट probably more than 7,000 kilometers, while the present length of India is 3,200 kilometers. So this India started moving from here. It went in the west direction, then it rotated direction. तो नॉर्थ डायरेक्शन में काफी घूम फिर के इसने अपना ठिकाना पकड़ा नॉर्थ की तरफ चलने का, और जब नॉर्थ की तरफ चला तो यहाँ पर ये एशिया के साथ आके जुड़ क्या गया, मजबूरी थी क्योंकि इससे आगे जा नहीं सकते थे, वो बहुत बड़ा था। एशिया यूरोप है और यूरोप प्लस एशिया इज मच बिगर देन इंडिया, तो उन्होंने इंडिया को आगे नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा तुम आए हो तो अब तुम झुक के रहो। अब यहाँ पर ये इंडिया करीब 7 करोड़ साल पहले का, और ये इस डायरेक्शन से ये चलना शुरू हुआ। ये 5.5 करोड़ साल का है, थोड़ा और इक्वेटर के करीब आ गया 5.5 करोड़ साल पहले। 3 करोड़ साल पहले इक्वेटर को करीब करीब क्रॉस करने की स्थिति में आ गए थे हम, इक्वेटर से फिर भी काफी साउथ में थे। फिर 10 करोड़ साल पहले यहाँ पर आ गए थे हम, और आज हम यहाँ पे हैं। इस पूरी प्रोसेस में जब हम यहाँ पर आके टकराए तो इतना सारा पोर्शन हमने खो दिया। दैट इज रफली, अलग अलग लोगों का अलग अलग एस्टिमेट है। कोई कहता है हमने 2,500 स्क्वायर किलोमीटर की 2,000 किलोमीटर की लेंथ खोई है, कोई कहता है 3,500 किलोमीटर की खोई है, कोई कहता है 2,000 किलोमीटर की खोई है। बट एनीवे we have lost this substantial portion of our land in this process of Himalaya formation. So कितनी एग्जैक्टली खोई है क्योंकि अलग अलग एस्टिमेट्स हैं, और जब हिसाब लगाया कि भाई अगर हम फोल्ड फॉल्ट को वापस फ्लैट कर दें तो
जब हिसाब लगाया तो पता चला कि हमने तो कुल 1200 किलोमीटर खोया है, और जबकि हमारे जो फिगर है वो तो 2500 से लेकर 3000 3500 तक बता रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, कहाँ गया? तो जब इसका आंसर ढूंढा तो उन्होंने कहा कि सारा का सारा जो पोर्शन हमने खोया है वो हिमालय माउंटेन बनने के लिए नहीं खोया है। वो इसके अलावा जो तिब्बत की आज मोटाई है, जो डबल उसकी थिकनेस है, 5 किलोमीटर से ज्यादा थिकनेस है, थोड़ा पोर्शन उसमें गया है, और उसके बाद थोड़ा पोर्शन और नॉर्थ में चले गया। तो इस तरह से ये 2500 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर का जो हिसाब है वो वर्कआउट किया गया। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, आप देखेंगे जब 7 करोड़ साल पहले हम बड़े आराम से चल रहे थे 3 to 5 सेंटीमीटर पर ईयर की रेट से नॉर्थ में, जब थोड़ा टाइम गुजर गया तो हम 67 मिलियन ईयर पे जब आए तो हम 67 से 50 के बीच में हमने दौड़ लगाना शुरू करी जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, 20 सेंटीमीटर पर ईयर। और जब हम आके टकरा गए, यहाँ पे आके टकरा गए, तब हमारी रेट वापस घट के 4 सेंटीमीटर पे हो गई, मतलब जहां से चले थे वहीं पे हम आ गए। तो ये जो 20 सेंटीमीटर पर ईयर की रेट आई जब हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, बहुत कम ऐसे उदाहरण है दुनिया में जहाँ पे कोई कॉन्टिनेंट इतनी स्पीड से बढ़ा हो। तो इसका कारण ये था कि हम एक हॉट स्पॉट के ऊपर से निकल रहे थे। हॉट स्पॉट क्या है कि जहां पे बहुत अधिक वॉल्केनिक एक्टिविटी हो और वो वॉल्केनिक एक्टिविटी लंबे टाइम तक चले। तो उस हॉट स्पॉट पे जब इंडियन क्रस्ट पहुंची घूमती हुई, तो उसके कारण प्रभाव ये हुआ कि इंडिया को बड़ी तेजी से आगे खिसकना पड़ा। और उस हॉट स्पॉट का प्रभाव ये था कि यहाँ पर साउथ में डेकन ट्रैप बना, जिसका एरिया आज की तारीख में भी 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब है, और इसकी थिकनेस कहीं कहीं 2-2 किलोमीटर है। तो इतना बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन, इतनी अधिक क्वांटिटी में वॉल्केनिक इरप्शन इंडिया की लैंड पे हुआ था, और ये करीब 67 मिलियन ईयर के आसपास हुआ था। और इसकी जगह जगह हमको फिर वॉल्केनिक एविडेंस मिलते हैं। तो ये हमारी जर्नी रही 7 करोड़ साल से लेके आज तक की। अब जब हम टकरा ही गए और आगे नहीं जा सकते थे, तो पीछे से हमारे को फोर्स लग रहा था। वो फोर्स लगने के कारण क्या हुआ कि क्योंकि हम काफी छोटे थे तो हमको झुकना पड़ा। तो ये हमारी स्थिति हो गई कि हम बजाय आगे जाने के या यूरेशिया को धकेलने के, हम खुद ही झुक गए। और ताकि जो पीछे से जो फोर्स लग रहा है उसको एडजस्ट कर सके। तो कुछ तो हम झुकने में एडजस्ट कर लिया और कुछ ऊपर जाने लगे। तो ऊपर जब जाने लगे तो ये हिमालय माउंटेन यहाँ पे आना शुरू हुआ। हिमालय माउंटेन कोई एक दिन में नहीं आया है, ये धीरे धीरे आना शुरू हुआ। शुरू के कई लाख साल तक तो यहाँ माउंटेन आ ही नहीं। धीरे धीरे जो तेथिस समुद्र था उसका पानी इधर उधर जाने लगा। जब पानी चले गया तो फिर लैंड बनी। लैंड बनने के बाद करीब 25 करोड़ साल नहीं, करीब 2 करोड़ साल पहले ये एरिया माउंटेन का शेप लेने लगा, 20 मिलियन ईयर्स के आसपास, जिसको बोलते हैं मिड मार्सियन अपलिफ्ट। और ये मोस्ट पावरफुल अपलिफ्टमेंट था जिसके कारण हिमालय ने शेप लिया। जब इसने शेप लेना शुरू करा तो उसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ पे एक डिप्रेशन बन गया, और उस डिप्रेशन में ये हमारा इंडो गंगेटिक प्लेन और शिवालिक का सेडिमेंट जमा होने लगे। और क्योंकि फोर्स लग रहा था तो ये जो क्रस्ट यहाँ पे थीन थी ये थिक हो गई इसके जाने के कारण। तो थिक हो गई तो यहाँ पे तिब्बत की थिकनेस बढ़ गई। तो आज हिमालय अगर नॉर्थ में है तो उसका कारण ये है कि हम फर्दर नॉर्थ में नहीं जा सकते थे, तो हम मजबूरन डाउनवर्ड, इसको सबडक्शन बोलते हैं जियोलॉजी की लैंग्वेज में, सबडक्ट होके या नीचे जाने लगे। इसमें जब सबडक्ट होके नीचे जाने लगे तो यहाँ पर अब क्योंकि दो रॉक एक दूसरे से टकराएगी, दो बड़ा बड़ा मास जो 70-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर थिकनेस के हैं, 150 कहीं कहीं 150 किलोमीटर के भी हैं, तो हीट जनरेट होगी। तो उसके हीट जनरेशन के कारण ये मैग्मा के पॉकेट्स बनने लगे, और यही मैग्मा के पॉकेट्स ऊपर आके उन्होंने वॉल्केनिक रॉक और प्लूटोनिक रॉक्स बनाई। जगह जगह पे हमको वॉल्केनो के एविडेंस मिलते हैं, वॉल्केनिक रॉक के मिलते हैं और प्लूटोनिक रॉक के मिलते हैं। और क्योंकि प्रेशर इधर से लग रहा था, इधर से भी प्रेशर लग रहा था, तो इन दोनों का नतीजा ये हुआ
कि यहाँ पर क्रस्टल थिकनेस बढ़ने लगी। तो कई जगह हिमालय में क्रस्टल थिकनेस 80 किलोमीटर है, 82 किलोमीटर तक है, खास करके नॉर्थ में। तो ये 82 किलोमीटर, जबकि सामान्य तौर पर क्रस्ट की थिकनेस 35 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के आसपास होती है। तो ये यहाँ पे डबल क्रस्टल थिकनेस हो गई, और ये डबल क्रस्टल थिकनेस के कारण आज तिब्बत काफी ऊंचा है दूसरे जगह के मुकाबले। और अब क्योंकि प्रेशर दो ही साइड से लग रहा था, तो उथल पुथल होना स्वाभाविक थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिस्टर्बेंस डिफॉर्मेशन शुरू हुआ और तरह तरह के ये फॉल्ट्स बनना शुरू हुए। इसमें इस डायग्राम में ये क्लियरली दिखाया गया है कि ये पोर्शन नीचे जा रहा है, और यहाँ पर इसकी मेल्टिंग से ये इग्नियस रॉक बनी, और जब क्योंकि फोर्स लग रहा था तो सबसे पहले एथियन फ्यूचर जोन बना, फिर उसके बाद मेन सेंट्रल थ्रस्ट आया, फिर एमबीटी आया, और इसके इधर मेन फ्रंटल फॉल्ट बना। और ये जो लाइन है ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये देखेंगे धीरे धीरे डीप होती जा रही है। इसको मेन हिमालयन थ्रस्ट कहते हैं। ये मेन हिमालयन थ्रस्ट के ऊपर तो आप डिफॉर्मेशन देख रहे हैं, इसके नीचे डिफॉर्मेशन नहीं है। तो ये मेन हिमालयन थ्रस्ट में जब ऊपर की राख मूव करेगी, नीचे की स्टेबल रहेगी, तो ये जितने अर्थक्वेक आते हैं वो इसमें मूवमेंट के कारण आते हैं, और नीचे का अपना एज इट इज वो उसका काम चलता रहता है। ऊपर ही एडजस्टमेंट हो रहा है, नीचे की तरफ एडजस्टमेंट नहीं हो रहा। अब जब एडजस्टमेंट हो गया, होने लगा, तो जैसे कि कोई चीज चिपकी रहती तो उसको निकालने के लिए हमको खुरचना पड़ता है। तो नीचे हार्ड रॉक हो और ऊपर सॉफ्ट मटेरियल हो, तो सॉफ्ट मटेरियल को खुरच के निकालना पड़ता है। तो यही हमारी क्रस्ट के साथ हुआ। जब खुरचने लगे, फोर्स तो पीछे से लग ही रहा था, और ये एक तरह से वो है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हुआ। इसमें जब फोर्स लगने लगा तो जगह जगह ये फॉल्ट बनने लगे। ये हमारा मेन फ्रंटल थ्रस्ट है, मेन हिमालयन थ्रस्ट है, और इससे तरह तरह के फॉल्ट निकलने लगे। एक ये फॉल्ट बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना। ये आप इसको कह सकते हैं मेन फ्रंटल थ्रस्ट, क्योंकि इसकी हाइट कम है। इसके बाद आ जाएंगे मेन बाउंड्री थ्रस्ट, इसके बाद आ जाएंगे मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और फिर टेथियन थ्रस्ट, और इसके बाद ये जो तिब्बत के थ्रस्ट है वो आ जाते हैं। तो इस तरह से, इस तरह की ओरिजिन कि नीचे की राख का कुछ नहीं हो, ऊपर की राख डिफॉर्म हो, और डिफॉर्मेशन के साथ साथ इसमें अब थिकनेस बढ़ती जाए, इसको बोलते हैं डिकोलमेंट ओरिजिन। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर हाइपोथेसिस अबाउट द ओरिजिन ऑफ द हिमालय। डिकोलमेंट एक टर्म है जिसका मतलब होता है नीचे हार्ड मटेरियल है, ऊपर सॉफ्ट मटेरियल है, और प्रेशर लगने से सॉफ्ट मटेरियल डिफॉर्म हो रहा है, हार्ड मटेरियल का कुछ नहीं हो रहा है। अगर इसका उल्टा होता तो नीचे हार्ड मटेरियल और ऊपर सॉफ्ट मटेरियल होता तो उसको डाइपियर बोलते हैं। यहाँ पर एक दूसरी थ्योरी दी प्लेट टेक्टोनिक्स में ही, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन ओरिजिन ऑफ द हिमालय। इसमें यह है कि इंडिया जब नॉर्थ की तरफ पुश करने लगा, तो जैसे हम दीवार में खील ठोकते हैं, और वो खील ठोकने के कारण क्या होता है कि आसपास जब एडजस्टमेंट होता है तो कहीं छोटे छोटे क्रैक्स आते हैं। तो एग्जैक्टली उन्होंने कहा जब इंडिया ने नॉर्थ की तरफ पुश करा तो उसके कारण ये पूरा रीएडजस्टमेंट हुआ, तो यहाँ पे पोर्शन उड़ गया, और इधर जो मैंने कहा था कि 15-20 मिलीमीटर तो हम यहाँ कंज्यूम करते हैं और बाकी इधर कंज्यूम होता, तो फोर्स लगने के कारण कुछ हिस्सा इधर कंज्यूम हुआ, कुछ इधर कंज्यूम हुआ, और जो प्रेशर था वो इधर भी गया और इधर भी निकला। तो देखेंगे आप पूरे एरिया में फॉल्ट ही फॉल्ट है, और ये फॉल्ट हजारों किलोमीटर लंबे हैं, और इनमें मूवमेंट हो रहा है। डायग्राम में उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, अगर किसी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको मूवमेंट किस रेट से हो रहा है ये दिख जाएगा। सो इंडेंटेशन ओरिजिन डिस्क्राइब्स दी फोर्सफुल पेनिट्रेशन ऑफ इंडिया इनटू तिब्बत, और ये एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव करा गया। इसमें ये जो ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स हैं ये क्ले की बनी हुई है, और इसमें कोई हार्ड ऑब्जेक्ट को प्रेस किया गया है जिस रेट से इंडियन प्लेट मूव हो रही है, और उसके कारण ये जगह जगह ये फॉल्ट्स बने हैं। ये रेड रिवर फॉल्ट है, ये अल्टेंटा फॉल्ट है, ये इंडो चाइना ब्लॉक के फॉल्ट्स हैं। तो
that is also having proof. Then ये डायग्राम इंडेंटेशन का ही है, जिसमें यहाँ पे मूवमेंट बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि किस रेट से यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे 6 मिलीमीटर पर ईयर से हो रहा है, यहाँ पे 20 to 30 मिलीमीटर पर ईयर से हो रहा है। और इंडिया को भी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जगह इंडिया अलग अलग रेट से नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में स्लिप कर रहा है। यहाँ पे 33.8 मिलीमीटर की रेट से बढ़ रहे हैं, तो यहाँ 14.2 मिलीमीटर की रेट से बढ़ रहे हैं, और इधर 23 और इधर 10 to 15। तो डिफरेंट काइंड ऑफ फॉल्ट। तो ये पूरा पूरा एक टेक्टोनिक सिस्टम ये इंडिया के नॉर्थवर्ड पुश के कारण बना है। तीसरी जो थ्योरी है वो चैनल फ्लो कहलाती है। इसमें जो मटेरियल है वो, जैसे मैंने कहा था कि लेसर हिमालय और हायर हिमालय ये इसके पेनिनसुलर इंडिया के नदर्न पार्ट के हिस्से हैं, और जब ये बकल हुए प्लेट के मूवमेंट के कारण झुके तो ये जमीन के अंदर गए, और जमीन के अंदर जाने से ये वापस निकल के सरफेस पे आए। तो हुआ क्या कि जब जमीन के अंदर गए तो यहाँ पर इस डेप्थ पे काफी अधिक हीट थी, तो काफी हीट के कारण इनमें मेटामॉर्फिज्म भी हुआ, इग्नियस एक्टिविटी भी हुई, और ये घूम फिर के वापस ये आए। तो इस जगह से गए और वापस हम लौट के आए। तो इस ओरिजिन को चैनल फ्लो ओरिजिन बोलते हैं। तो आज हमको अगर हायर हिमालय में, सेंट्रल हिमालय में मेटामॉर्फिक रॉक मिलती है तो वो इस थ्योरी के हिसाब से ऐसे मिलती है। और इसके दो ये मॉडल हैं। ये दूसरा मॉडल है, इसमें यहाँ पर थिकनेस ज्यादा है, विड्थ ज्यादा है, तो ये मटेरियल अंदर ही जा रहा है, ऊपर नहीं आ रहा। यहाँ पे ये रिटर्न होके आ रहा है। ये थर्ड डायग्राम थोड़ा सा अधूरा आ रहा है इसके कारण, तो इसमें आप देखेंगे कि ये मटेरियल वापस निकल के आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब जियो साइंटिस्ट, दे सपोर्ट द चैनल फ्लो हाइपोथेसिस, बट दैट चैनल फ्लो इज एप्लीकेबल फॉर ओनली लेसर हिमालय एंड हायर हिमालय। और यहाँ पर जो हिमालय की हाइपोथेसिस है ओरिजिन की, इस डायग्राम में समराइज हुई है। एक ये अंडर थ्रस्टिंग मींस इंडिया अंदर गया, और ये इसने यहाँ पे थिकनेस बढ़ाई, और यहाँ पे ये हिमालय माउंटेन बना, ये बाकी एरिया तिब्बत बना। लोअर क्रस्टल फ्लो ये चैनल फ्लो वाला ही सिस्टम है। इसमें ये मटेरियल अंदर गया और फिर ये बाहर निकल के आएगा, और उसने थिकनेस बढ़ाई और उसके कारण ये हिमालय बना। डिस्ट्रीब्यूटेड शॉर्टनिंग, इसमें बेंडिंग के कारण, इंडियन प्लेट की बेंडिंग के कारण तरह तरह के थ्रस्ट फॉल्ट बने, और ये थ्रस्ट फॉल्ट ने, क्योंकि थ्रस्ट फॉल्ट में एरिया घटता है और रॉक ऊपर उठती है, तो ये थ्रस्ट फॉल्ट जो है उन्होंने हिमालय को ऊपर उठाया। यहाँ पर इंट्रा कॉन्टिनेंटल सबडक्शन, इंट्रा कॉन्टिनेंटल सबडक्शन का मतलब ये कि दो तरफ से सबडक्शन हो रहा है, एक इस साइड से हो रहा है और एक इस साइड से हो रहा है। तो इसमें भी एविडेंस ढूंढे गए इंडिया में जहाँ दो तरह से सबडक्शन है, और उसको इंट्रा कॉन्टिनेंटल सबडक्शन कहा। डीलेमिनेशन थ्योरी, इसमें जो लोअर क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट का लोअर पार्ट मेन बॉडी से अलग हो जाता है और वो नीचे की तरफ सिंक करने लगता है। तो यहाँ पर जब ये सिंक करेगा तो इधर का मटेरियल इधर आएगा, ऊपर आएगा, मेंटल का मटेरियल ऊपर आएगा, और वो पुश करेगा हिमालय को ऊपर की तरफ। तो जब ये पुशिंग हुई अपवर्ड डायरेक्शन में, तो डीलेमिनेशन के कारण हिमालय बना। और ये जिसको अभी मैंने डिस्क्राइब करा था इंडेंटेशन थ्योरी, तो इंडेंटेशन में ये नॉर्थ की तरफ पुश कर रहा है, और उसके कारण यहाँ पे तरह तरह के फॉल्ट बने और एडजस्टमेंट हुआ है। नाउ हिमालय क्या है, क्यों अपनी जगह पे है। अब उसके बाद आते हैं कि हाउ लॉन्ग हिमालय, कब तक हिमालय रहेगा, या हिमालय का फ्यूचर क्या है। अभी अभी हमने तिवारी साहब का लेक्चर सुना और उसमें उन्होंने बताया कि बड़ी भयावह सिचुएशन है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, और इसके क्या इम्पैक्ट होंगे अभी हम कहने की स्थिति में नहीं है। असेसमेंट जरूर कर सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट होंगे वो अभी इतना क्लियर नहीं है। अब हिमालय की बात करें तो इसमें आज की तारीख में करीब 15,000 ग्लेशियर्स हैं, और हिमालय का जो चार्म है वो इसकी पीक्स के कारण है, डीप वैली के कारण है, ग्लेशियर के कारण है, लेक्स के कारण है, रिवर्स के कारण है, वाटरफॉल के कारण है, स्लोप्स के कारण है, हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं, अभी भी अच्छे फॉरेस्ट हैं, और यहाँ की जो सिविलाइजेशन है वो कम से कम 3,000
साल पुरानी है, खास करके नीतिमाना की सिविलाइजेशन, जिसके एविडेंसेस श्रीनगर के म्यूजियम में है। और ये माउंटेन में ह्यूमन इन्फ्लुएंस के कारण बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था। और ह्यूमन इन्फ्लुएंस का नतीजा ये हुआ कि यहाँ पे हिमालय में तरह तरह की एक्टिविटी हो रही है। आदमी तो कर ही रहे हैं दुनिया भर की एक्टिविटी, जिसमें वो रोड वाइडनिंग भी है, डैम कंस्ट्रक्शन भी है, एग्रीकल्चर लैंड फॉर्मेशन भी है, और दूसरी एक्टिविटीज भी हैं। लैंडस्लाइड और मास वेस्टिंग प्रोसेस हो रही है, फ्लड, क्लाउड बस्ट, लाइटनिंग, ये नेचर कंट्रोल्ड है। अर्थक्वेक, दिस इज कंट्रोल्ड बाय द प्लेट मूवमेंट, क्योंकि नॉर्थवर्ड पुश हो रहा है, तो उस पुश के कारण जो स्ट्रेस जनरेट होती है वो हो रहा है। स्नो अवलांच, बिकॉज द स्लोप्स ऑफ स्टीप, तो एक्यूमुलेटेड स्लो फॉल्स डाउन, एंड क्लाइमेट चेंज इज ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज का असर अभी बताया गया है, और धीरे इससे कोई मना नहीं कर सकता, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। अब डेंजर क्या है? लैंडस्लाइड, इरोजन, वेदरिंग, रोड वाइडनिंग, माइनिंग, स्लोप मॉडिफिकेशन, ये ह्यूमन एक्टिविटी है। इसमें से दो एक्टिविटी जो सबको पीछे कर देती है वो है इरोजन और वेदरिंग। ये दोनों नेचर कंट्रोल्ड है, और ये सारी एक्टिविटी जो हैं करीब 140 करोड़ टन सेडिमेंट हर साल प्रोड्यूस करती है, और ये सेडिमेंट इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर द्वारा ले जाया जाता है। सबसे पहले इस सेडिमेंट ने सामने जो गड्ढा था जिसको हमने फोर्डलिप कहा उसको भरा, और उसके बाद जब वो भर गया तो डेल्टा बना। डेल्टा बनने के बाद वो भी डेल्टा में जब फर्दर ग्रोथ पॉसिबल नहीं हुई तो वो फिर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में गया। तो इतनी बहुत ह्यूज क्वांटिटी है ये, और वर्ल्ड का सबसे ज्यादा सेडिमेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट से प्रोड्यूस होता है। करीब 10% से ज्यादा यहाँ से प्रोड्यूस होता है, और उसमें हिमालय का कंट्रीब्यूशन काफी अधिक है। पेनिनसुलर इंडिया का कंट्रीब्यूशन तो इसके मुकाबले नेग्लिजिबल है। अब ये जो सेडिमेंट प्रोड्यूस हो रहा है और जो हिमालय में ये चेंजेस आ रहे हैं, उसका इफेक्ट सर्वाइवेबिलिटी पे हो रहा है। सोसाइटी में भी तनाव के लक्षण दिखते हैं, लोग परेशान होते हैं, और ये कहा जाता है कि हिमालय इज ए फ्रेजाइल माउंटेन, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग डाउन, rivers will dry up, and rivers and spring will dry up, scarcity of water, desertification of lush green Himalaya. तो अब स्थिति ये आ गई है कि इतने सारी चुनौतियां हैं, और इनकी वास्तविकता क्या है? हिमालय इज ए फ्रेजाइल माउंटेन। इसके पीछे कारण ये कि हम बरसात के दिनों में जगह जगह लैंडस्लाइड होती है, तो हमने कह दिया हिमालय इज ए फ्रेजाइल माउंटेन, हिमालय कोलैप्स हो जाएगा। पिछले साल जोशीमठ का इंसिडेंस देखा था, बड़ी भयावह स्थिति थी, और उसके बाद जब पानी निकल गया तो जोशीमठ में एक तरह से लाइफ सेटल हो गई। डेंजर अभी भी है, और ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग डाउन। निश्चित रूप से ग्लेशियर्स की मेल्टिंग प्रोसेस चल रही है, और ग्लेशियर की मेल्टिंग प्रोसेस अभी से नहीं है, ये इंटरग्लेशियल पीरियड में हम रह रहे हैं। इंटरग्लेशियल पीरियड आज के 20,000 से लेके 12,000 वर्ष पहले शुरू हुआ था। कहीं पे 20,000 साल पहले स्टार्ट हुआ था, और कहीं पे 12,000। तो अगर हम कम से कम भी माने तो 12,000 वर्ष पहले से ये मेल्टिंग शुरू हुई है, और इसके कारण कंटिन्यूअसली ग्लेशियर्स पीछे की तरफ जा रहे हैं। ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स एंड स्प्रिंग्स, स्प्रिंग तो ड्राई हो रहे हैं पर रिवर्स ड्राई नहीं हो रही। खासकर जो मेजर रिवर्स हैं उनमें वाटर की कमी नहीं है, उनमें उनकी लगातार मॉनिटरिंग होती रहती है। सेंट्रल वाटर कमीशन मॉनिटरिंग करता है, और उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि इसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर किसी साल कम हुआ। वाटर का वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम रहता है। स्कैरसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है तो पीने का पानी या कंजम्पशन का पानी की क्वांटिटी घटी है, ये पिछले लेक्चर में बताया गया था। पर स्कैरसिटी ऑफ वाटर इज मोर रिलेटेड विद मिसमैनेजमेंट रादर देन नेचुरल स्कैरसिटी। अगर मिसमैनेजमेंट को टैकल कर लिया जाए तो वाटर की स्कैरसिटी हिमालय में नहीं है। अभी भी हिमालय में काफी अधिक, उत्तराखंड में काफी अधिक बारिश होती है, और वो वाटर अगर प्रॉपरली कंज्यूम करें, कंजर्व करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डेजर्टिफिकेशन ऑफ लश ग्रीन हिमालय। अब माउंटेन जंगल जो कट रहे हैं, दैट इज
द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसको रोका जा सकता है डेजर्टिफिकेशन से, पर ग्लोबल वार्मिंग का असर धीरे धीरे होगा। हिमालय की स्ट्रेंथ ये है कि ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर ईयर की रेट से। अब इस रेट से अगर मूव करेगा तो इसका जो मूवमेंट है वो यहां से, दिस दी मिड इंडियन रीज, दिस इज मिड अटलांटिक रीज, ईस्ट पैसिफिक राइज। तो ये जो रीज है ये हिमालय के माउंटेन को जनरेट करने के लिए फोर्स डेवलप कर रही है। 5 सेंटीमीटर इधर जो डेवलप हो रहा है, 5 सेंटीमीटर पर ईयर इधर नई क्रस्ट डेवलप हो रही है, और जो नई क्रस्ट डेवलप हो रही है वो हिमालय को इधर की तरफ फोर्स कर रही है, इंडिया को नॉर्थ की तरफ फोर्स कर रही है। तो जब तक ये सिस्टम रहेगा तब तक हिमालय ग्रो करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तब तक हिमालय में भूकंप भी आएंगे, हिमालय ऊपर भी उठेगा, और हिमालय अब क्योंकि ऊपर उठने की एक लिमिट है, वो लिमिट से ज्यादा उठ नहीं सकती जमीन, वो आइसोस्टेसिस से कंट्रोल होती है और ग्रेविटी वैल्यू से कंट्रोल होती है। तो हिमालय ये कहें कि कल से प्लेन बन जाए तो उसके चांसेस बिल्कुल नहीं है। ये सिस्टम कब तक चलेगा तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि कितने करोड़ साल तक चलेगा। अभी अभी ये शुरू हुआ है, तो नेचुरली हम ये कह सकते हैं कि 50-60 करोड़ साल तक तो ये चलेगा ही चलेगा, क्योंकि मैंने शुरू में बोला था कि जो सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल है उसका ड्यूरेशन 50 से 80 करोड़ के बीच में होता है, और ये सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल अभी 50 करोड़ साल पहले ही शुरू, सॉरी 4-5 करोड़ साल पहले ही शुरू हुई थी। तो अभी इसको काफी लंबे टाइम तक चलना है, और काफी लंबे टाइम तक चलना है तो नेचुरली इंडिया का एरिया भी घटेगा, क्योंकि हमें तो नॉर्थवर्ड पुश होना ही है, और हम हर साल कुछ न कुछ इंच जगह तिब्बत में जा रही है हमारी, या चीन के अंदर जा रही है, तो उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 लाख साल में कितना होगा, और 10 लाख साल में कितना होगा, और 1 करोड़ साल में कितना होगा। बट हमारी जिंदगी में हमारे रहते ये चेंजेस इतने माइनर है कि हम उनको देख नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर जब तक ये मिड इंडियन रीज से मटेरियल जनरेट हो रहा है तब तक ये हिमालय का सिस्टम मेंटेन रहेगा। और ये जो भूकंप के जो रेड डॉट दिख रही है ये भूकंप की है, तो यहाँ पे भूकंप भी आते रहेंगे, माउंटेन भी ऊपर उठता रहेगा, और उठने के कारण जो रेट है इसकी वो अलग अलग जगह पर अलग अलग रेट है। कहीं पे ये 1 मिलीमीटर की रेट से उठ रहा है, कहीं पे ये 2 मिलीमीटर से उठ रहा है, कहीं कहीं पे तो ये 8-10 मिलीमीटर की रेट से उठ रहा है। और इसी तरह से जो डेनुरेशन की रेट है वो भी हाईली वेरिएबल है, वेदरिंग की, इरोजन की, डेनुरेशन की रेट। और यहाँ हजारों पीक हैं ऐसी जो 5500 मीटर से ऊपर है। अब सवाल यह कि जो हिमालय की स्नो लाइन है, स्नो लाइन का कंसेप्ट इवन BA1 ज्योग्राफी या BSc1 जियोलॉजी का स्टूडेंट भी जानता है कि इट इज अ लाइन अबव विच स्नो डज नॉट मेल्ट इन समर, इट इज अ परमानेंट स्नो लाइन। तो हिमालय की स्नो लाइन 6000 मीटर पे है, खास करके वेस्टर्न हिमालय में, और ईस्टर्न हिमालय में करीब 5500 मीटर पर है। तो सवाल यह है कि इन पीक से ऊपर, अगर इस हाइट से ऊपर पीक है तो क्या वहां पर स्नो खत्म हो जाएगा या आइस खत्म हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूं कि अगर कोई एरिया स्नो लाइन से ऊपर है तो क्या स्नो खत्म हो जाएगा? अब सवाल ये कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग को भी अकाउंट करें तो अभी तक हिमालय में 2 डिग्री की ग्लोबल वार्मिंग हुई है जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है। तो 2 डिग्री से ग्लोबल वार्मिंग कितनी होगी? 4-5 डिग्री तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। क्रिटेशियस टाइम में जाएं तो क्रिटेशियस टाइम में अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। क्रिटेशियस मतलब 6-6.5 करोड़ साल पहले, और आज अर्थ का टेम्परेचर है 15 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं, एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं, हम ये कह सकते हैं कि 10 डिग्री मैक्सिमम अर्थ का टेम्परेचर राइज होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। आज जिस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हम परेशान हैं कि 420 डिग्री 420 पार्ट ppm कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, पहले ये 280 थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, और आज 400 हो गई।
तो एक जमाना ऐसा था जब यहाँ पर 9000 ppm कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, दैट इज टू मच। और हिमालय बनने के पहले इस क्षेत्र में 600 ppm कार्बन डाइऑक्साइड थी। तो गर्मी तो खैर रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड पर, धीरे धीरे वो इफेक्ट टेपर होता जाता है। उतना ऐसा नहीं कि 300 ppm पे 10 डिग्री टेम्परेचर तो 600 ppm पे 20 डिग्री हो जाएगा, 1-8 डिग्री इस तरह से अंतर आता रहेगा। ये है सिस्टम। तो ये क्वेश्चन आप लोग डिसाइड करिए कि अगर कोई एरिया स्नो लाइन के ऊपर रहेगा, चाहे स्नो लाइन की हम हाइट 6000 से 7000 मीटर करते हैं, जो कि काफी लंबा टाइम लेगी ग्लोबल वार्मिंग की रेट्स के हिसाब से, तो क्या 7000 मीटर के ऊपर ग्लेशियर रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्वेश्चन ये आता है क्या बारिश होगी या नहीं होगी। अब अगर बारिश टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेनफॉल भी बढ़ेगी। ये जरूर है कि उसका पैटर्न चेंज हो रहा है, पर यह कोई नहीं कह सकता कि ये अर्थ पे क्लाउड बनना बंद हो जाएंगे। टेम्परेचर तो बढ़ेगा पर वाटर का इवापोरेशन नहीं होगा, ये दिस इज इम्पॉसिबल। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोर वाटर इवापोरेशन होगा। हो सकता है कि वो साइकिल चेंज हो जाए, कहीं पे बारिश हो कहीं पे नहीं हो, पर ऐसा नहीं कि मानसून खत्म हो जाएगा। और मानसून अगर हिमालय में आया तो वो कहीं ना कहीं जाके बरसेगा ही बरसेगा। तो अगर इतनी हाइट पे, अगर 7000 मीटर की हाइट पे बादल जाते हैं, तो आप अंदाज लगा लीजिए कि वहाँ स्नो गिरेगा या रेन गिरेगी। सो विद दिस I conclude my lecture because I have already taken a lot of time, and I am thankful to Geographical Society of Central Himalaya, also to Professor Kamlesh Kumar, Rajesh Bhatt, and my student Dr. Raghuveer Negi for helping me in preparing the slides and other things. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर। आपका लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव रहा, आपका भी और तिवारी सर का भी। और मैं सोचती हूँ कि हमारे वेबिनार से जितने स्टूडेंट टीचर्स जुड़े हुए हैं, सभी को काफ़ी जानकारी आज के इस प्रेजेंटेशन से मिली होगी। मुझे यहाँ पे मेरे गुरुजी प्रोफेसर एस.सी. खरपाल सर भी दिख रहे हैं, तो अगर सर मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज यहाँ पर कुछ कहते आप प्रोफेसर एस.सी. खरपाल सर। सर राजेश सर चल अभी थे। थैंक यू मैम। पहले मैं थोड़ा सभी से निवेदन करूंगा कि अपना वीडियो ऑन कर दें एक स्क्रीनशॉट फोटो के लिए, उसके बाद आगे का कार्यक्रम। सभी अपना वीडियो ऑन कर दें। सभी से निवेदन है अपना वीडियो ऑन कर दें। Thank you, sir. Now I invite Professor V.P. Satish sir to summarize the lecture of keynote speaker. Professor V.P. Satish sir, currently working at Professor Mizoram Central University. Professor Satish sir is one of the senior professor of geography in India and world. You are senior fellow of our society. Professor V.P. Satish sir. To Geographical Society of Central Himalaya for giving me this opportunity from time to time, sometimes bigger role, sometimes small role. And thank you, Professor Kamlesh Kumarji and Professor Anita Arulolaji for all these opportunities they are giving me. So as we know that we have heard two very comprehensive and very long descriptive lectures from the two giant geographer and also geologist. So I would like to start with the Professor Prakash Tiwari ji, as he spoke on the global environmental change and Himalaya impact responses and option for sustainable development.
So that was very, very, very comprehensive and very, that hard-rending lecture. As he spoke on, he just told that all these the materials or the subject matters, whatever he had spoke in his lecture, were from the many projects he conducted within and outside India on the Himalayan region. He raised many questions also. He just asked why to listen Himalaya and its people. So that was a very big question, and then he answered it also in terms of that. He told that about 70 to 80% fresh water Himalaya is providing to its people, and it is about 50% of the total global water, fresh water in the world. Also, he has talked about that Himalaya is producing 20 to 25% of the tourism. So that is also very huge one. All are very important in terms of the economy and also in terms of environmental conservation, as he talked later on in his presentation. He told that 50% people are poor and 45% people are still they are living under poverty line in the Himalayan region. That is a very critical issue, and he raised this nicely. He also talked about that there in 2030, the Sustainable Development Goal has put some, that something called the Sustainable Mountain Development Initiatives. So by 2030, the sustainable mountain development to be achieved as per the Sustainable Development Goal of the United Nations. So again, he also talked about why revisiting Himalayan dilemma. So there was a book written by Masreli and Ives that was the Himalayan dilemma. The book was written in 1970, and this actually this gave a light for the Himalayan regions because they made this book very comprehensive. So then again, we have to revisit this Himalayan dilemma because Himalaya is facing lots of problems as you have seen in the presentation of both of the speakers. So Himalaya has pristine socio-ecological systems, so that we have to revisit the Himalaya. Himalaya has natural and cultural diversity, but on the other hand, there is a rapid urbanization. More than 30%, 30% population is urbanized, and also Himalaya is providing 45% of the ecosystem services to the people. And that is highest in the world. Even Alpines, Alps, Andes, or Atlas, or whatever they are, Himalaya is providing 45% ecosystem services. And also, there are at the same time, there are large environmental changes, and these changes are vulnerable to climate change, and all these climate change and the environmental change are causing for the devastation of land and its people. As we know that every year there are lots of geohydrological events, incidents are taking place, and they are mainly due to this climate change and environmental changes. And now the Himalaya is on the crossroad of devastation. So मैं ये कहता हूँ कि बातें आज भी सारी हुई और होती रहेंगी, लेकिन हिमालय के सरोकारों को कौन जानेगा, कौन समझेगा? This is always a question mark. And then he also talked about that the Lesser Himalaya is hot spot of the Himalaya because Lesser Himalaya is a place where a large concentration of population is inhabiting, with rearing their livestock also, and forest fire is very intensive in the Lesser Himalayan region. As we know that the Lesser Himalayan region is prone to this is having large माइक म्यूट हो चुका है सर। आवाज नहीं आ रही सर। Okay. Oh, acha. Maybe there's some problem. So
He also talked about the draft environmental impact assessment policy 2022, and then he was talking about the water resources. So Himalaya is known as the water tower. Huge water resources are found. At the same time, the people facing scarcity of water everywhere. During the summer, it is like a hell. No water available under the plenties of water. So we term this plenty plenty in scarcities like this. So that is also the huge gap in water demand and water supply, and also forest depletion. It is causing for forest depletion also uh, taking place at a large scale, and which is causing for forest fire and climate change. Then he also talked about the farming and food system in the Himalaya. So farming is declining. That many results have come out of it because people are out migrating, and there is not only a climate change driver. There are many drivers causing for declining of this farming system and also food. Uh, and then food security is a critical challenges in the UN or all over the world, like South Africa, South Asia. These are the hot spot for this food insecurity. Increasing temperature will be vulnerable to the Himalaya. And then also the IPCC report already mentioned that 1.5 degrees centigrade temperature, if it increase, it will be a large devastation. And if it go for 2 degrees centigrade, it will be very devastating for our Earth system, because even a small proportion of climate is temperature is increased, it will have very repercussions, very devastating repercussions, as Professor Tiwari mentioned. So, and then he also talked about the urbanization, because in the Himalayan region, urbanization is always unplanned. It is causing to, that shifting, or also urbanization is shifting towards the high altitude due to the tourism, mainly the pilgrimage tourism. And then also in Himalaya, there is socio-economic inequalities in terms of that the district of Dehradun, Haridwar, and Udham Singh Nagar, they have very high per capita income, and also they have large agricultural resources. But when you talk about the Chamoli or Pithoragarh or Champawat, they are very poor people. Crop production productivity is also low. So this is rightly he mentioned that socioeconomic inequalities are there. And also he questioning that do we need tourism? Tourism we need, but not at the level at that shape we are facing the tourism problem. So we need a policy. The policy need definitely tourism is contributing a large proportion of income and economy for the Uttarakhand, and it is also land of gods and goddesses. So pilgrimage tourism is very very popular here. But we need policies how much tourists can visit. So that he was talking about carrying capacity analysis of the tourist places, how much people can go in a place, how many people in a place, and then they have the whether they have the carrying capacity or not. Transportation, accommodation, lodging, fooding, all this. So that we have to see. And finally, we have to see the option for sustainable development. That is a very crucial, critical point, that what will be the options. One option will not work. There will be multiple options for sustainable development of the Himalayan region. And I will say that because ये हमारे यहाँ एक कहावत है कि मैं तो जो बोल रहा हूँ वो ये बात है कि वो सूरज को एक दिया जलाने वाली बात है. Professor Tiwari, I know he is a very huge person in terms of working on the Himalayan region, and he has lots of knowledge. He has lots of collaboration in the at the international level, and he is वो हम एक और बोलते हैं ना गागर में सागर हैं. So thank you, Professor Tiwari, for your very enlightenment presentation, and we got all knowledge out of your presentation. You have nicely presented, and thank you very much. So another speaker was Professor A.K. Biani sir, very very renowned geologist and also senior
professor from our area only, from Dehradun. So he is very close to the Himalaya. So he talked about Himalaya, what, why, and how long. So every aspect, what, why, and how long he described very, very nicely. And lastly, how long he talk about also what is going on, what is the climatic changes will impact on this Himalayan region. So he talked all about this. He also talked about that the Himalaya is abode of gods and goddesses, water tower. It has rich biodiversity. It has and he was talking about the alpine parcel, and we have the Himalaya. So he was also talking about the alpine Himalayan families has many names, like in South America, North America, Europe, Australia, because in all continents alpine passerlands are found. In Europe, it is called alpine meadows. We call it alpine passerland or Bugyal. So he was talking very nicely about all these mountain systems. He has given the definition of the Himalaya in terms of political. Political means the Pakistan, China, India. He gave the definition of geography, where geography is located in the South Asia. And then also he talked about geology, because he's geologist. So he has very vast knowledge on geology. He was talking about tectonic movements, also how the Tethys Sagar came into being. He talked lots of things about this. He saw many maps related to the Himalaya, and on the different aspects of the Himalaya. And also he divided Himalaya into various divisions, the vertical division or the horizontal divisions, and also the geological division of the Himalaya, geographical division of the Himalaya. He spoke on the ancient theory of this Pangaea, Panthalassa, and Tethys Sagar, Tethys geosyncline, and he told how the Himalaya came into existence after the colliding of the Angara land and Gondwana land, uh, Eurasian and Indian plates, and then Himalaya came to exist. And also, he talked about another land masses, and he nicely elaborated the Ganges system, the Brahmaputra system, the Sindhu system, and in between the Himalaya is located. So I just congratulate him, and I extend my warm greetings to him for this very good deliberations. And finally, he talked about how long Himalaya. So he very nicely interpreted, and I hope that, because when we started the meeting, there were about 100 participants. Now they have reduced to 45. But anyway, many are still there. So I hope that all these participants have enlightened, and they got lots of knowledge from these two very big presenters. With this, I stop here, and I again extend my acknowledgement to all of the people who are involved in this geographical society of Central Himalaya. Thank you, and once again, thank you very much. थैंक यू Thank you, सर। sir. आपका सहयोग निरंतर मिलता रहता है। और अब मैं सभी श्रोताओं का, मुख्य अतिथियों का धन्यवाद करने के लिए जोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ सेंट्रल हिमालय के सचिव डॉक्टर किरण त्रिपाठी मैम को आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर किरण त्रिपाठी मैम। ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ सेंट्रल हिमालय द्वारा आयोजित हिमालय दिवस के इस वेबिनार के प्रमुख वक्ता कुमाऊं विश्वविद्यालय के नैनीताल परिसर में भूगोल विभाग के भूतपूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पीसी तिवारी जी का मैं सोसाइटी परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आपने हिमालय की संवेदनशीलता के संदर्भ में बताते हुए हम सभी लोगों का ज्ञानवर्धन किया। मैं आशा करती हूँ कि भविष्य में भी आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। द्वितीय वक्ता के रूप में मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ डीबीएस कॉलेज देहरादून के भूगर्भ विज्ञान विभाग के भूतपूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ए.के. वियानी जी का, जिन्होंने हिमालय की उत्पत्ति तथा हिमालय के जो क्लासिफिकेशन है उसके संबंध में
डीपली जानकारी हम लोगों को दी, इसकी जिससे हम सारे लोग जो हैं काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। आशा करती हूँ कि भविष्य में भी आप हमारा सहयोग करते रहेंगे। तत्पश्चात धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ सोसाइटी के संरक्षक प्रोफेसर कमलेश कुमार जी का, जिनके अथक प्रयास से सोसाइटी आज इस प्रकार के कार्यक्रमों को कर रही है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ सोसाइटी के फेलो सदस्य के रूप में मिजोरम यूनिवर्सिटी के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ज्योग्राफी बीपी सती जी, प्रोफेसर बीपी सती जी का, जिनका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहता है। साथ ही साथ आपका आशीर्वाद की हमेशा आप कामना करते हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ सोसाइटी के फेलो सदस्य प्रोफेसर GS रावत जी का। आपका भी हमें सहयोग हमेशा मिलता रहता है और आशा करती हूँ आगे भी मिलता रहेगा। इसी प्रकार से हल्द्वानी कॉलेज से मैं प्रोफेसर BR पंत जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आपका सहयोग हमें मिलता रहता है। मैं HNV गढ़वाल विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर MS सती जी का, MS नेगी जी का, वो प्रोफेसर BP नेथानी जी का भी हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ रायपुर की जो भूतपूर्व प्राचार्य रही हैं और मेरे साथ ऋषिकेश में हमारी HOD रही हैं, प्रोफेसर वंदना शर्मा मैडम का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। कोटद्वार के प्राचार्य महोदय PS नेगी जी का आपका भी सहयोग हमें मिलता रहेगा, आशा करती हूँ। इसी प्रकार से मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ DBS कॉलेज के प्रोफेसर अनिल पाल जी का, साथ में गुप्ता जी और विजय भुगड़ा सर तथा डॉक्टर कमल मिश्र जी का, कि आपका सहयोग भी हमें हमेशा मिलता रहेगा। इसी प्रकार से मैं जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनमें से प्रोफेसर डॉक्टर टमटा जी का, साथ में डॉक्टर कमलवीर जी का, डॉक्टर राजेश भट्ट और डॉक्टर मंजू भंडारी, डॉक्टर प्रोफेसर अनीता पांडे मैम, प्रोफेसर पूनम रोतेला मैडम जी का, आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ गोपेश्वर कॉलेज से डॉक्टर BP देवली जी का, अगस्मिनी कॉलेज से डॉक्टर ममता शर्मा जी का और कोटद्वार कॉलेज से कंडवाल मैडम जी का। इसी प्रकार से मुझे पूरे ज़्यादा ध्यान नहीं आ रहे, लेकिन इसमें फिर हमारे जो मेंबर हैं उसमें प्रोफेसर राजशेखर जी का, और इसी के साथ साथ जितने भी हमारे मेंबर्स हैं या जितने भी छात्र छात्राएं वो रिसर्च स्कॉलर हमारे इसमें जुड़े हैं, उन सभी का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ। मुझे इस टाइम के अभाव में सभी का नाम नहीं ले पा रही हूँ, और हृदय की गहराइयों से मैं जितने भी लोग हैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ। और मैडम रोडोला जी मैडम के अंडर में हमारा ये प्रोग्राम जो हुआ है, उनका मैं तहे दिल से अभिनंदन करते हुए धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपने सभी अतिथियों का धन्यवाद किया। अंत में मैं थोड़ा सा एक सूचना देना चाह रहा हूँ। आज हमारे वेबिनार में 325 लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है, और जो हम सभी के लिए ये सभी भूगोलवेता जो है हमारे उत्तराखंड एवं अदर स्टेट्स के हैं, और ये बहुत खुशी का क्षण है कि हमारी सोसाइटी 325 रजिस्ट्रेशन और 100 ही लोगों को हम इसमें जो है इनवाइट कर सके हैं, क्योंकि गूगल मीट में 100 ही लोगों को हम यहाँ पे परमिशन दे पाए, तो इसमें पार्टिसिपेंट जो है लगातार बदलते रहे। और इसमें डॉक्टर कमल सिंह बिष्ट सर का धन्यवाद करना मैडम भूल गई, और ये हमारे सोसाइटी के एक्टिव मेंबर्स और एसोसिएटेड प्रोफेसर DBS कॉलेज, और मेरे साथी उपेंद्र सिंह चौहान जी भी 2000 से इसमें जुड़े हैं, उनका भी धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं जो मेरे साथ यहाँ पर टेक्निकल देख रहे हैं वीर सिंह जी, उनका धन्यवाद कोई नहीं करता, लास्ट में जो है उनको छोड़ देते हैं मैडम।
तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारा वार्षिक कैलेंडर है उसके हिसाब से हम फिर से दोबारा मिलेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अध्यक्ष महोदय से मैं अनुमति लूंगा कि आज का वेबिनार यहीं पर समाप्त करने की अनुमति दें। अब यहीं पे समाप्त किया जाए और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. थैंक यू सर, थैंक तिवारी यू जी मैम। कैसे हैं आप? आपका म्यूट है आपका बंद है।